All right. So let me quickly introduce myself. So my name is Kushag. Kushag Srivastava. Right. So I'll be taking your session today. Um, I just a bit about myself. So currently I'm working as a data scientist, right? And prior to that, I was a JEE Advanced math teacher, right? So I used to teach JEE Advanced students mathematics, right? So I've done this for about 5 odd years. So that's why I'm taking this particular session. Apart from this, I have actually given this examination as well. So my last attempt to this examination was in 2020, right? So I wrote PGDBA 2020, right? Along with Akash, and this is where me and Akash met as well. So as you can see, there are a lot of WhatsApp groups in while you prepare for PGDP. बहुत सारे WhatsApp groups हैं. Mostly preparation usually happens through these WhatsApp group. So this is where I met in one of those groups. This is where I met Akash, right? So in this examination, I scored 117 out of 150, right? My split between math and English. So in math, LRDI, and English was the following. So I scored like 105 on 105 here. And unfortunately, I just could score 12 marks out of the 45 remaining marks, right? So I did cross the cutoff. That year, the cutoff was around 111, right? For general, right? For this examination, the cutoffs are usually very high. Um, मतलब 105 तो लेके ही चलो, राइट? अगर 150 का मार्क्स है तो 150 का पेपर है तो यूजली 105 रहता है. लास्ट ईयर थोड़ा कम हो गया कट ऑफ, बट यूजली अच्छा जाता है इसका कट ऑफ. इट्स ऑलवेज वेरी गुड. ठीक है. तो वी नो, मतलब आई when I was preparing for this particular year, तो we I know this paper inside out as far as math is concerned, कि वो किस किस्म का क्वेश्चन डालते हैं, कैसे क्वेश्चंस डालते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस डालते हैं, कौन सी बुक्स आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो when I was preparing for this examination, I used to, a lot of, since I was a J advanced math teacher, so a lot of people used to come to me, and they would ask out कि कैसे prepare करें, क्या करें. So I used to tell them कि ये books पढ़ लो, या ऐसा कुछ कर लो, ये सब material सही है. So this is what I'm going to, for first 5 odd minutes, since we are waiting for few more people to join. तब तक मैं आपको बताता हूँ, how to prepare for this PGDPA math section, right? As you can see, I didn't do well in English, so English के बारे में मेरे बात करने का कोई तुक भी नहीं बनेगा. So I would just talk about this math section. LRDI section is usually doable, right? So if you have right amount of time, you can easily do LRDI. LRDI ऐसा CAT type का नहीं आता, doable सा आता है. So let's talk about the math section, right? So if I sort of talk about the math section here, as you know, the syllabus is 11th and 12th class math, right? So 11th and 12th class math is the syllabus. Uh, what you can expect, right? So chapters like set theory is there, all right? You have combinatorics. Uh, this year they have introduced basic probability as well. So I'll say basic probability, right? Along with this, um, of course, whole of calculus. So differential calculus. Okay. We do have integral calculus as well, right? But integral calculus बहुत straightforward आती है, बच्चों वाली आती है.
So don't try and do very hard integral questions. ऐसा कोई मतलब अपने आईआईटी के टाइम पे आपने जैसे इंटीग्रल पढ़े होंगे उस किस्म के इंटीग्रल्स नहीं आते, राइट? मोस्टली इंटीग्रेशन भी अगर आप देखेंगे, it's broken up into three parts. The first one is indefinite, right? So if you remember, it used to be pretty hard, right? Back in school days, if you have prepared for JE and all. So indefinite, definite, and finally you will have area under curve. ठीक है? तो area under curve, so let me call this A, let me call this B, and let me call this C. You will definitely get a question from C, because I remember अगर आप papers को भी देखेंगे, if you go through all the past year papers, you usually get one question on area under curve. तो ये तो definitely आएगा ही आएगा, और बहुत straight forward आता है, एकदम बेसिक 12th क्लास वाला आता है, कोई मुश्किल नहीं आता. डेफिनेट का क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट? जो डेफिनेट इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज, राइट? सो प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको जरूर करके जाइए. इनडेफिनेट में ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है. इनडेफिनेट के ऐसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है इस एग्जाम में. तो इतना, if you just know the formulas, I think you're good to go. You don't really need to understand like the gazillion forms that uh, that are usually taught in indefinite. So if you have studied indefinite well in class 11th and 12th, so you might remember कि आपके टीचर ने हर फॉर्म के बारे में आपको बताया होगा कि अच्छा इस फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं. So when I used to teach this for class 12th, it used to take me a good entire month to go through this. So उतनी इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. फॉर्मूला याद करिए, मूव ऑन टू डेफिनेट, राइट? मूव ऑन टू एरिया अंडर कर्व, एंड यू विल बी फाइन फॉर इंटीग्रल कैलकुलस. डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा आएगा, right? So differential calculus में what do I mean by this? So I'm also including functions in here, right? Function से शुरू होते हुए limits, continuity, differentiability, right? All the same set of things. जितना भी differential calculus में आता है ये सब पूरा आएगा, right? और ये अच्छा भी आएगा. So this is one area which will be, this could be closer to IIT advanced, right? जैसे IIT advanced का पेपर आता है, more or less वैसा इस टॉपिक से आ सकता है पेपर. ठीक है? And I'll Sir, tell you like, in a minute why is this the case, right? I'll tell you in a minute why is this the case. So आप अगर कैलकुलस, मतलब ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, you should do this portion well as well. uh, apart from this, you have coordinate geometry, right? So coordinate geometry वही typical JEE main किस्म की जो होती है, right? वैसे ही आएगी. I mean, there has been few occasions जहाँ पे अच्छे questions भी आए हैं coordinate geometry से, right? So ये JEE main जितनी आएगी, it will not go to JEE advanced, but JEE main की जितनी जिस level की coordinate geometry होती है, you would have to prepare at that level, right? So I think this broadly covers everything that math has to offer in PGDBA, right? Akash, am I missing anything? कोई topic रह नहीं रहा नहीं, हो? मोर और लेस कंप्लीट है. मिसलेनियस वाला पार्ट रहेगा थोड़ा बहुत, ट्रिग्नोमेट्री का हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, Hello, बट वो कवर can you कर guys सकते hear हैं. me? मतलब Hello. हेलो. अच्छा, trig. Okay. Hello, हाँ, मैं ऑडिबल हूँ. Akash, are you there? या आई एम देयर. हेलो. हाँ हाँ, एक हाँ. मिनट. आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? Can you guys hear me properly? Yes, yes. Hello. All Yes, right. we can hear. Um, I can't hear. I can't hear Akash though. Somehow. मेरा Is मेरा आ Akash रहा है, also आवाज अभी आ speaking? रहा है. I can't hear him. ठीक आई है. एम स्पीकिंग. Someone was asking any question. हाँ. I think I can't hear Akash. चलो nonetheless. So what I was saying, किसी को कोई question है? You guys can ask question. Unmute करो और पूछ लो question. I will not be going through the chats.
थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए चैट्स में आना. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड स्टफ, अगर आपको कोई मैथ कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कुछ करना है, तो यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड आस्क. सर, हाँ 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 हाँ. डिफरेंशियल इक्वेशंस आता है क्या? ओके ओके. डिफरेंशियल हाँ इक्वेशंस का? हाँ हाँ, ठीक है आकाश. सो मिसलेनियस में, हाँ, किसी ने, आई थिंक मैंने, आई जस्ट सॉ दैट कि ट्रिग्नोमेट्री है, राइट, ट्रिग एंड स्टफ. सो देखो, हाँ, ऑडिबल ऑडिबल, राइट. यस आकाश, श्योर ऑडिबल. ठीक है. सो बेसिकली मिसलेनियस, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ सकती हैं, राइट. सो आई, सो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आई थिंक 19 या 19 में तो कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे, हाँ, आकाश, आई कैन हियर यू. कोई लैग है क्या स्क्रीन में? हेलो. हाँ, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस रह गया. यस, दिस इज द राइट. डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस रह गया. Sir, I have one question. Yes, determinant and matrices. So this is also an important topic. तो मैं इसमें थोड़ा और आपको, let me go through all these topics again. So set theory जो है, अच्छा आएगा. You'll get one question, but you'll get a good question, right? So आप set theory को ऐसा मत समझिए that it will be a very straightforward question that will come out of. हाँ हाँ, हेलो. डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता है, मतलब वो कन्वेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता जो तुम सोच रहे हो कि वेरिएबल सेपरेटर मेथड यूज करना पड़ेगा या होमोजेनियस मेथड यूज करना पड़ेगा, इस किस्म का नहीं आएगा. मतलब ऐसा कोट एंड कोट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा या बर्नूली का क्वेश्चन नहीं आएगा. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता भी है तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. मतलब एक dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम लीनियर फंक्शन होगा, उसको मतलब सॉल्व करना होगा, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा. So I will not suggest studying differential equation per se. हाँ, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर एक हल्का सा फंक्शन दे दिया है, ऐसा वो कुछ अंग्रेजी में लिख देंगे which will translate into say something like this. थ्री, ठीक है, तो इससे फंक्शन बनाना आना चाहिए आपको कि ये y क्या फंक्शन बनेगा. ठीक है, बस इतना आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन. आर वी गुड? हेलो. Sir, I have one question. So, for studying this, how many days यस, गो अहेड. approximately is required for covering the entire बोलो math बोलो, syllabus? गो अहेड. Hello, can you hear me? Can you hear me, sir? यस, गो अहेड. हेलो. So, I was asking how many days is required to cover all these topics, like the entire maths for the PGDBA exam? Hello, can you hear me? Hello. Can you hear me, sir? Hello. हेलो. हेलो. हाँ, मेरे को कोई सुन नहीं Can रहा. you hear me now? मेरे एंड से लैग है, मैं कुछ करता हूँ. Okay, bye. Okay, let's wait for 5-10 minutes. Okay, lag हो रहा है थोड़ा सा. Just wait for 5-10 minutes.
Hello. Am I audible now? Yeah, मैं Yes, sir, audible we हूँ? can hear You you. audible? हाँ, सॉरी सॉरी गाइस, मेरे एंड से कुछ इशू रहा होगा। Okay, ठीक है। sir, I was just asking for covering हाँ all हाँ, the बोलिए। mathematics topics in the हम्म। remaining number of days. Yes. How many days is required only for the mathematics part? Yeah, I'll come to that. Okay, so this is one Okay. question. Any other questions? Sir, my Any question other is, हाँ hello. हाँ, बोलिए। सर माय क्वेश्चन इज सेट थ्योरी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम्म। केट लेवल के होते हैं या उससे डिफरेंट टाइप के आते हैं? देखिए, टिपिकल कैट लेवल के नहीं हो, मतलब देखिए एक दो साल आई थिंक कैट लेवल के आए हैं। कुछ कुछ साल बहुत कैट लेवल के नहीं आए हैं, लेकिन बड़े सेट थ्योरेटिक आए हैं। अगर 2019 का पेपर देखेंगे तो एक जो सेट थ्योरी का सवाल था, वो काफी क्या कहते हैं, जो सेट थ्योरी की थ्योरम्स होती है ना, थोड़ा उस किस्म का था। मतलब आप उसको एक्स वाई को कुछ एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आई डोंट थिंक कैट में उस किस्म का उस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, बट लेकिन जो कैट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सेट ए में इतना है, बी में उतना है, और सी में इतना है, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, वो किस्म के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बट मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सेट थ्योरी के अच्छे सवाल जरूर लगा के जाएं। ठीक है, क्योंकि सेट थ्योरी एक मुश्किल अच्छा क्वेश्चन आएगा सेट थ्योरी का। आप पिछले 2016 से जितने भी पेपर्स हुए हैं, आप उसको उठा के देख लीजिए। सेट थ्योरी का क्वेश्चन हमेशा अच्छा आया है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आया है। ठीक है। कमिंग टू कॉम्बिनेटोरिक्स, कॉम्बिनेटोरिक्स का भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, एक या दो आएंगे। ठीक है, और ये भी हमेशा अच्छे आएंगे, ये भी अच्छे आएंगे, राइट। सो दिस विल बी a good topic. You would have to prepare well for this. Combinatorics से मेरा मतलब है PNC, permutation and combination. Alright. ठीक है, बेसिक Hello, प्रोबेबिलिटी sir. इसी। हाँ, कहिए। Yeah, हेलो। Meko, I wanted to ask regarding this combinatorics. I was going through the quiz and I came across a problem that required the application of generating functions. हाँ हाँ, So we'll do do I that. have to do that part? I will teach you generating functions today. Don't worry. Sit tight. Okay. Yeah. So basic probability has just been introduced. So I'm not exactly sure when they say basic probability, what would they mean? But I think I have an intuitive understanding of what they mean by basic probability. I don't think they will go beyond maybe I'm not actually sure whether they will go till base theorem or not, right? क्योंकि base theorem तक भी पूरा क्लास 12th प्रोबेबिलिटी तो कवर हो ही जाता है। माय एस्टिमेशन इज दैट दे विल आस्क यू अ कॉम्बिनेटोरियल क्वेश्चन, और वो प्रोबेबिलिटी में उसको रैप कर देंगे बस कि ये है। मतलब क्वेश्चन कॉम्बिनेटोरिक्स का होगा, लेकिन वो प्रोबेबिलिस्टिक सा पूछ लेंगे आपसे। सो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। आई डोंट थिंक कि वो बेस थ्योरम तक जाना चाहिए, बट अगर हुआ तो वी कैन कवर बेस थ्योरम एज वेल। इट्स अ फेयरली सिंपल टॉपिक, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छा आएगा, दिस अगेन विल बी गुड। ये आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, खूब सवाल लगाने पड़ेंगे, तभी आप इसका पेपर में भी निकाल पाएंगे। अच्छे सवाल आते हैं, आप 2016 से 2020 के बीच में देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस पे हर बार अच्छे सवाल आते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का डेफिनेट इंटीग्रेशन जो रहेगा वो बहुत इजी रहेगा, राइट। कोई मुश्किल सवाल नहीं आता है इस पे, डुएबल सा आता है। एक क्वेश्चन रहता है जो हर बार, आई थिंक समवन वाज जोकिंग अबाउट दिस द अदर डे ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, कि ये क्वेश्चन अभी तक भौकाल मचा रहा है। सो वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एफ ऑफ आर बाय एन वाले जो होते हैं, जिसमें फंक्शन को आर बाय एन बनाना पड़ता है और इंटीग्रल 0 से 1 में लेके जाना पड़ता है। सो वो एक वैसे किस्म का क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। सो आई थिंक वो आ सकता है, और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर उस मेथड को आप एक दो बार पढ़ लें अच्छे से, देन इट इज मोर लेस कवर्ड। यू डोंट हैव टू रिविजिट, मतलब ऐसा कुछ बहुत भोकाली नहीं है उसमें। एक दो बार आपने वैसे क्वेश्चन कर लिए तो यू विल बी एबल टू डू इट। सो आई विल पुट दिस इन द वेरी इजी ब्रैकेट, एंड दिस विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे मैंने आपको कहा कि जेई मेन जितनी आएगी, जेई मेन से बिल्कुल आगे नहीं जाएगी, राइट। तो आपको ये तो अच्छे से सॉल्व करनी पड़ेगी। कोई भी मटेरियल उठा लीजिए और उसके सिंपल क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने शुरू करिए।
आई वुडेंट से कि एनसीईआरटी लेवल की आएगी, एनसीईआरटी से तो डेफिनेटली ऊपर आएगी, राइट? कुछ लोग कहते हैं कि बस एनसीईआरटी सॉल्व कर लो एंड इट विल मतलब आप कर लोगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होने वाला। ये एनसीईआरटी से तो पक्का ऊपर जाएगा लेवल इसका, ठीक है? तो जेई मेन जितना जाएगा, और कोई भी आप स्टैंडर्ड जेई मेन की किताब उठा लेंगे, उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे, देन यू विल बी फाइन, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री पे आई वुड रेकमेंड कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, राइट? देयर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दिस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, अब जब मैं 11th को पढ़ाता था ट्रिग्नोमेट्री, इट यूज टू टेक मी अ गुड 3 months टू कवर एवरी सिंगल नूक एंड कॉर्नर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट? सो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है, तो दी ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज कि इसके फॉर्मूले आप एक बार गो थ्रू कर लें, राइट? और क्वेश्चन यूजली टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री का नहीं आता, आता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आता है, राइट? और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन जनरली आएंगे। सो इस टॉपिक को, अगर किसी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, सो दिस वुड बी वन टॉपिक दैट यू शुड रीड। I would actually not suggest reading this, but trigonometric equation is one thing that you should go through, right? Determinant matrices 100% आएगा, right? 100% you'll get a question from this. You're applying to for a course in data sciences, तो matrices नहीं पूछेंगे तो they won't do justice with it. Definitely इसका भी एक आएगा, इसका भी एक आएगा, so I'll do 1+1, ज्यादा भी आ सकते हैं, और easy questions आएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं आएंगे, बहुत easily doable रहेंगे, राइट? और बाइनोमियल थ्योरम का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, राइट? इजी टू मॉडरेट रहेगा, मुश्किल भी हो सकता है, डिपेंड करता है व्हाट इज योर लेवल। सीक्वेंस सीरीज का भी क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और ये मॉडरेट लेवल पे ही आता है मोर और लेस, राइट? सो ब्रॉडली दिस इज व्हाट PGDBA math sort of looks like, ठीक है? If you have any other questions you can ask, otherwise I'll get started with the combinatorial quiz. कोई कुछ पूछना चाहता है? Sir, um, so what बोलिए। about solutions of triangle वाला chapter? हाँ, नहीं आएगा, जबरदस्ती टाइम मत वेस्ट करो उस पे, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वगैरह पे। अगर कुछ पढ़ना चाहते हो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, तो एक दो चीजें देख लो, जैसे कि व्हाट इज साइन रूल, राइट? व्हाट इज नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है? जो बेसिक प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इन सब के फॉर्मूलाज देख लो एंड सो ठीक रहेगा। बट मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग इनके फॉर्मूलेज देख भी, और कोसाइन फॉर्मूला एज वेल, राइट? तो इनके फॉर्मूलेज देख भी लोगे ना, पर अगर तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं इन पे, तो इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा भी नहीं। आई मीन, अगेन, this examination sort of depends a lot on how have you prepared for your JEE in 11th and 12th. अगर तुमने अपनी JEE में 11th and 12th में बहुत मेहनत कर रखी है, तो this math section will be a piece of cake for you, right? अगर नहीं कर रखी है, तो you might have to work hard on those things. Having said that, solution of triangles को you can completely forget about it as well. इतना कोई issue नहीं है, ऐसा इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि तुम इसके सवाल लगाने बैठ जाओ। अगर कुछ पढ़ना है तो साइन रूल पढ़ लेना और कोसाइन रूल पढ़ लेना, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ, राइट? ठीक है? सो देयर वाज दिस लेडी हु हैड आस्क्ड मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि हमारे पास इतना टाइम रह गया, हाउ शुड वी गो अबाउट द प्रेप, राइट? सो आई विल जस्ट आंसर हर क्वेश्चन नाउ, एंड सो आई थिंक आपका एग्जाम 27th मार्च को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? नाउ इफ यू, तो आपके पास काफी, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीना है, 2 महीना नहीं, थोड़ा कम है, लेकिन लगभग वैसा मान लेते हैं। अब इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन सॉर्ट ऑफ डिपेंड्स अपॉन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, राइट? तो आई वुड एक्चुअली रेकमेंड यू टू, अगर आपने बिल्कुल ही तैयारी शुरू नहीं की अभी, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ डे 1 फॉर यू, तो आई वुड एक्चुअली रेकमेंड कि आप कोई एक पेपर उठा के देख लें, राइट? सो यू कैन स्टार्ट ऑफ विद 2016 पेपर, मुश्किल पेपर था, राइट? इट वाज नॉट अ इजी पेपर, आईआईटी खड़गपुर ने बनाया था, इट वाज अ गुड पेपर। आपने, मतलब दिस इज योर फर्स्ट शॉट एट पीजीडीबी एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो आई would recommend you to test yourself on this particular paper. I can ask, or you can test yourself on this particular paper, 2019 का पेपर, 2018 का भी अच्छा था, right? And 2017 was very easy, and 2020 was also pretty easy. 2021 I have heard was very good, right? So आप इनमें से कोई एक पेपर उठा के अपने आप को टेस्ट कर लीजिए,
without even preparing for the examination, right? मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए तभी, आप बस इसका कोई भी एक पेपर उठा लीजिए, see where you stand, right? Once you're comfortable with this, मतलब आप देखिए कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप इसमें कि किसी एक पेपर में उठा के, ठीक है? So I would recommend you to start with this if this is your day one, right? Now, there could be two things. Usually preparation will depend upon your prerequisite. Like I said, आपने अपने जेई में बहुत अच्छे से तैयारी की है, right? So you are from IIT, NIT, BITS, right? अगर आप इस सेक्शन से हैं तो आपके लिए ये बहुत इजी होगा and you will run through this paper, right? This will be a very easy paper for you. All you would need to do is you need to do some sort of a preparation. So if you are in this sector, I would actually recommend you, what the way you should go about the preparation is कि आप जाइए, बस कोई भी जेई मेन की बुक उठा लीजिए, राइट? कोई पास्ट आईआईटी जेई मेन बुक उठा लीजिए, और जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन टॉपिक्स का आप पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एंड दैट्स इट, राइट? दिस विल गिव यू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। बस क्यों ये जो पेपर है, इट्स नॉट हार्डर देन जेई मेन पेपर। ये जेई मेन से बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगा, इनफैक्ट जेई मेन का पेपर इससे कहीं ज्यादा मुश्किल आता है, राइट? सो जेई मेन की कोई भी पास्ट ईयर बुक उठाइए, और जो भी मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं यहाँ पे, उन टॉपिक्स का एक बार आप आराम से मतलब उन टॉपिक्स पे जाके पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगा के देखिए, अगर आपसे हो रहे होंगे तो आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो इफ यू आर फ्रॉम दिस सेक्टर, दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड यू। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट एंड आई विल से कि कैसे हो जाएगा। आपकी प्रिपरेशन इससे हो जाएगी, यू वुडंट हैव टू डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एंड इफ यू आर फ्रॉम अदर कॉलेजेस, राइट, and say you didn't prepare well in your own time, तब आपको आपको ये तो करना ही पड़ेगा, because you would have to go through the slog of understanding how to apply these problems। होता क्या है कि जिन्होंने अपने टाइम पे जेई मेन की तैयारी की होगी ना, उनसे क्या होता है कि उनको एकदम से याद सा आने लगता है कि अच्छा हम ऐसा करते थे क्वेश्चन, अच्छा हम ऐसा करते थे क्वेश्चन। तो अगर आपने अपने टाइम पे उतने अच्छे से तैयारी नहीं की है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। Now here I wouldn't recommend you to go on and solving all the questions for these folks, but यहाँ पे I would recommend you to do, जैसे आप मान लीजिए सेट थ्योरी कर रहे हैं या कॉम्बिनेटोरिक्स कर रहे हैं, तो आप आईआईटी मेन की कोई बुक उठाइए पास्ट ईयर और उसके सारे सवाल कर डालिए, राइट? ए टू जी जितने भी आ रखे हैं, मान लीजिए कब से एआई ट्रिपली शुरू हुई है, 2001 से शुरू, 2001 से शुरू हुई है, तो 2001 से 2020 के सारे क्वेश्चन कर डालिए एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। और जो नहीं होता वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, विल रिस्पॉन्ड टू दैट, राइट? one other source one other source which can be very helpful is the tomato book। have you heard of this book? किसी ने सुना है इस बुक के बारे में? हेलो, am I Yes, audible? sir. या हाँ, ये बुक I can literally take the questions from this book, जो आईएसआई ने डायरेक्टली पेपर में डाल दिया। सो ये आईएसआई का, ये एक्चुअली आईएसआई अपने बी स्टैट, एम स्टैट, राइट, हर पेपर में इससे सवाल डालती रहती है, राइट? तो मतलब आईएसआई जो अपने एग्जाम्स लेती है, उनके क्वेश्चंस वो कहाँ से, काफी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसका जो आइडिया होता है वो इस बुक से लेती है। काफी सिंपल बुक, मतलब सिंपल तो नहीं है, अराउंड 800 ऑड क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चंस की बुक है। I would highly recommend you to buy this particular book, right? And I would suggest, मतलब आपने अगर आईटी की, मतलब if you are in this category, आपने पहले नहीं किया है, तो first thing you should do is this: you shouldn't go to tomato because it's a hard book। आपसे बहुत सारे questions नहीं हो पाएंगे इसमें, ठीक है? So what I would rather suggest is, अगर if you are in this, if you are someone in this thing, और हो सकता है कि आप ना इसको करते करते बोर हो जाएं, तो अगर आप करते करते बोर हो जाएं तो आप इस बुक को उठा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है पूरी ए टू जी सॉल्व करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाइए जैसे अलजेब्रा, राइट? अलजेब्रा इसका बहुत अच्छा है।
पीएनसी इसका बहुत अच्छा है, सो कॉम्बिनेटोरिक्स बहुत अच्छा है इसका, क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत अच्छा है. आई वुड एक्चुअली हाईली रिकमेंड डूइंग डिफरेंशियल कैलकुलस फ्रॉम दिस बुक, राइट. सो इसका डिफरेंशियल कैलकुलस करिए, इंटीग्रल इसका उतना अच्छा नहीं है, बट ये सब काफी अच्छा है. आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हैं इससे, राइट. सो बस इतने टॉपिक्स करिए, आप पूरे 800 सवाल करने की जरूरत नहीं है, और कर भी नहीं पाएंगे. इट विल टेक यू good 3-4 months to complete all the set of questions, right? जैसे I see when I think Akash does put up some questions, जो शाम को around 8-8:30 आते हैं, वो सारे I think they are driven from tomato. कहीं ना कहीं वो टोमेटो से ही आए हैं, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे. ये 2016 से 2022 में 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं, डायरेक्ट इस किताब से आए हैं, राइट. सो यू शुड रीड दिस बुक thoroughly for these topics, right? ठीक है. Any other questions? Can we start now? कुशाग्र स्टार्ट करते हैं अभी. Yes. Uh, hi. ठीक है. हाँ. ओके Yeah, can you एवरीवन. hear me? या अक्षय, वी कैन हियर यू. Eh, Yeah, या actually, I was asking, ये सब जो हमने वो हमारा मॉक सीरीज है, उसको ऊपर करने आप बोल रहे हो, राइट? देखिए, मॉक सीरीज के ऊपर तो मैं नहीं सजेस्ट कर, मतलब इसके साथ साथ मॉक सीरीज तो आपको मॉक दे रही होगी ना बस, तो मॉक की वो प्रिपेयर. डेली क्वेश्चंस भी होते हैं, आई मीन पीडीएफ, वो डीपीपी भी है, few things हाँ, are आई there. थिंक वो सब तो फिर आई थिंक आकाश जिस तरीके से कवर कर रहा होगा, किसी को अगर बुक से प्रिपेयर करना है तो दिस इज व्हाट दे कैन डू, मतलब मेरा कहना ये है मोर लेस. ओके, मैं अच्छा. थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ. मैंने आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ द स्टफ जो भी मतलब अभी कुशाग्र ने बताया. तो मोस्ट ऑफ द स्टफ मैंने ट्राई किया कवर करने का, आइदर थ्रू ब्लॉग्स और थ्रू क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप और थ्रू लाइक डीपीपीज एंड सॉल्यूशंस एग्जांपल्स. तो अगर वो भी कर लोगे सफिशिएंट है. अगर वो नहीं कर रहे हो, इन केस यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट कोर्स, देन यू कैन डू दैट फॉर योर इंडिविजुअल सेल्फ. तो इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो. दैट वाज तो बस क्लैरिफाई करने के लिए. ग्रेट. Okay, okay, understood. चलो ठीक है. तो अभी सो विल. स्टार्ट करते हैं अभी क्विज. हाँ हाँ. Alright, okay. So let's get started with this quiz. What you would see is this is a integer type answer that you would have to put up. I hope the question is visible to everyone. The question is the following: each box in a 2x2 table can be colored black or white. How many ways are there to color the table? Right. So I hope you guys can see, and you can put up the answer. So I'll put up a timer as well. I think a good 2 minutes is fine for this. This is a fairly easy question, just to warm you up. I'll give a minute. Okay, so received 3 answers from Chandra, Dignesh, Param, and one from Shivam. Where are we answering these? I have put up the link, right? So you can. Aren't you able to see the link? Have you? Haven't you opened the Okay. link? And so you can just put up the number. It's an integer type. Yeah. No, I can't see the link though. Where have you Achha. put up the link, sorry? So I am putting I'll up it give you. again. Yeah. Okay. Akash डाल रहा है? डाल दिया ऑलरेडी डाल दिया. Alright. कितने लोग हैं total? How many people are there in the live chat? 28 live. 28 are live. So we have gotten responses from 8 of them. So 1 minute और दे देता हूँ मैं. Okay, 11 responses. It's a fairly easy question.
Okay. Uh, so I think we've exhausted 2 minutes, and it's more than enough for this particular question. We've gotten about 50% of the responses. So let me just finish it up and reveal what the answer was. So the answer was 16, and 14 of you got it right. Some people got the answer is 8. I mean, just one guy got the answer is 8. But nonetheless, um, can anyone talk me through what they did? कोई बता सकता है? Anyone who Hello, gave response? हाँ हाँ बोलिए. am I audible? Yes, yes, you're audible. Uh, there is a 2 x 2 box, so there are Mm-hmm. total four places to choose black or white. All right, So all right. either of the place can be chosen by 2 ways. So Okay, all okay. of the four boxes are, yeah. Yes, your answer is perfectly fine. So the reason I'm stopping here and explaining this solution, I mean, for most of you, this question would have been pretty straightforward. But why am I doing this thing is because uh, I want you to think how you should model these kind of problems. I know this is rule of multiplication; it's very straightforward. But I think the approach that I'm going to give you can also help you solve harder problems. So this is rule of multiplication, right? I'm sure you would have heard of this term. इसमें हो क्या रहा है? How would I model this particular problem? So I would say, okay, I have this particular square 2 cross 2. ठीक है? So I need to fill it up, right? And what are the different ways in which I can fill it up? Let's say I have two colors. One color is say red. मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि white तो अपने आप ही कलर रहेगा. चलो white ही ले लेते हैं. So white or black, right? Black. So I hope everyone knows what a relation is. सबको मालूम है relation क्या होता है, Cartesian product क्या होता है? Does everyone know about that? Hello? Does everyone know what a Cartesian product is? No, can you please tell me? Sorry? You don't know what a No, I don't. Cartesian I don't. No, no, no. I might know, but not with the the correct word. I mean, product? I don't know. Okay, okay, fine, fine. So let me go through the solution. If it doesn't make sense to you, you can, ask me again. All right. So what I Yes, would do sure. is, I would say I will put up the problem something like this. I will say, okay, let this be A1. Let me create a set A1. Now this set is saying that what are the different ways in which I can fill up a color here, right, in this particular box. So I've said this is A1, this is A2, this is A3, and this is A4, right? So A1 says what are the different ways in which I can color this particular thing up, right? So I'll say, okay, there are two ways. I'll say you can do it by white or you can do it by black, right? Now I'll go to A2 and I'll say the same thing. A2 can also be filled up in two ways, right? White or black. Then A3 would do the same, right? And finally, you'll have your A4, which will do the same as well. All right. Now, if you know what a Cartesian product is, so this would make sense to you. What I'll do is I'll cross all of these things. Right. So I'll create a cross of all of these things. Now, how would I write it up? I would write it up in the following manner. I would say I'll have A1, or rather C1, C2, C3, C4. So this right here is a tuple of size 4, right? Such that Ci comes from Ai. All right. Now, what does that mean? This means that I'm trying to create a tuple of size 4, which is C1, C2, C3, where C1, C2 could be any of, Ci comes from Ai. That means it could either be white or it could either be black. So let me take an example of how would this particular tuple look like. So if I take an example, say something like this, key C1, C2, C3, C4 is equivalent to say white, white, white. Right. Now, if I do this, what kind of a coloring would I have? I will have this kind of a coloring where everything is white. Does that make sense? सबको समझ में आ रहा है? Can anyone give me another tuple here? Can anyone give me another tuple of size 4? Yes. So you can have this as well.
say white, black, white, and black, right? So I would say, okay, so this is white and this particular thing is black, and then you have a white and you have a black again. So this will correspond to this thing, isn't it? Now, I will not go through the entire list, but you might realize that the number of tuples that I'm trying to create will be my final answer, isn't it? So basically, what you would say is that, okay, I would want to know what is the, you know, cardinality of this particular set, right? Now, the cardinality of this particular set would be nothing but the cardinality of individual sets, right? And how do I get it? I get it by the rule of Cartesian product, right? So the number of ways in what is the cardinality of A1? So that's 2. The cardinality of A2, that's 2 again. This is 2 again. This is 2 again. The final answer will be 16. Anyone has any doubt in what I said? All good? Right. Even though this question is very easy, but I would highly recommend you to start thinking about, uh, combinatorial questions in this particular format. The moment you start thinking about simple questions in this format, you will, be able to solve harder problems as well. Okay. Great. Shall I move on? Let's look at another question. So, how many ways are there to put up one white and one black rook on the chessboard such that they do not attack each other? Just give me a minute. All right. Sorry. Yeah. So I'll put up again 2 minutes for this. Okay. So we've gotten our first response from Shashidhar. Okay. From Shubham as well. Fairly easy question, just to warm you up. Again, you would have to put up the integer answer. Okay. Final answer should be an integer. Madhya, kindly mute yourself. Okay. So 5 responses. Okay. 3 different kinds of responses. Let's see. I think we have 28 people, so we should get more responses as well. All right. So we have what, 6 different responses or 5 different responses. Okay. Do you guys need another minute or shall I reveal the answer?
Anyone is doing any calculations? Should I reveal or anyone? Reveal, okay. You need 1 more minute. Chalo, I think I should reveal. The question was fairly straightforward. Let's see how many of you got it right. The answer was 3136. All right. So a lot of you gave this answer. I remember Shashidhar was the first one to give this, right? Um, ठीक है. We've gotten very different kinds of answers. So let's go ahead and look at the solution. Can you, anyone who wants to jump in and say how did they go about it? Like what did they do? May I tell? Uh, Yeah, sure. Please go ahead. Anyone? So we have 64 squares of 1 cross 1 on the chessboard. And if we choose any one place for the first All rook, right. then for the second rook, we can choose the rest 49 places. So 64 into 49 is the answer. 60. Okay. Yeah, great. Now, did you, by any chance, did the things that I talked about above, or you just went sir, ahead with? हाँ बोलो. sir, rook is what is like rook is elephant or like हाँ camel? हाथी होता है, हाथी होता है, हाथी. ओके ओके ठीक है सर ठीक है. 2 3 4 5 6 7. ठीक है. सो मैं एक बार और आपको बताता हूँ कि हाउ कैन यू मॉडल दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग द अबव थिंग दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट. ठीक है. अब क्या है कि जैसे समवन जस्ट गेव द आंसर, this girl who gave the answer, it was completely correct and you should have gone about this in this particular manner. But since मैं थोड़ा ये set theoretic चीजें आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि आप कभी कभी इफ यू आर नॉट रियली गुड एट कॉम्बिनेटोरिक्स ना, तो आपको लगता है कि जिनके सही हो रहे हैं ना, वो कुछ लाइक अलग सा ही उनका तरीका है सोचने का प्रॉब्लम्स का, जो हम नहीं सोच पा रहे. राइट. सो अगर आप इस सेट थ्योरेटिक फॉर्मुलेशन में इस क्वेश्चंस को समझेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए. राइट. सो लेट मी जस्ट क्विकली डू दिस. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 and 7. Right. So I have 64 squares here. I hope everyone knows chess. तो ये ABCDEFGH हो गया और ये 1 2 3 up till 8 हो गया. ठीक है. अब हाउ वुड आई मॉडल इट इन अबव मैनर? कैसे मॉडल कर सकता हूँ इसको? मैं कहूंगा लेट मी टेक अ पर्टिकुलर सेट ए. ठीक है. इसमें क्या चीजें मैं रखूं? मैं इसको ऐसे रखता हूँ A1. मैं हर स्क्वायर को रखूंगा इसमें. ठीक है. सो ये पहला स्क्वायर हुआ, ये दूसरा स्क्वायर हुआ, ये तीसरा, चौथा, सो ऑन सो फोर्थ. तो मैंने सारे स्क्वायर्स रख लिए इसमें. A1 A2 A3 so on so forth till A8. Similarly, I will do it for H1 H2 H3 so on so forth till H8. ठीक है. सो टोटल कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी होगी? 64. मेरे पास 64 स्क्वायर है यहाँ. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा? आई विल हैव, मुझे एक रुख प्लेस करना है. मैंने जहां पे वो रुख प्लेस कर दिया, मान लीजिए मैंने अपना रुख यहां प्लेस किया. राइट. नाउ रुख कैसे काम करता है? वो हमेशा सीधा चलता है. राइट. सिंस वो सीधा चलता है तो वो ये सारी चीजें ब्लॉक कर देगा. राइट. तो अब अगर वो ये सारी चीजें ब्लॉक कर देगा तो मैं दूसरा सेट बी कैसे बनाऊं? मैं ऐसा बनाऊंगा कि जितने भी स्क्वायर्स ब्लॉक आउट हुए हैं, आई गेट रिड ऑफ देम फ्रॉम ए. इजंट इट? तो ए में तो मेरे पास सारे स्क्वायर्स थे, पर मैंने उनको हटा दिया. मैं उन स्क्वायर्स को हटाने वाला हूं जो ये रुख अटैक कर रहा है. राइट. तो वो कैसे लिख सकता हूँ? देखते हैं कौन से ये रुक्स को अटैक कर रहा है. अब मान लीजिए अगर ये C3 पे रखा हुआ है तो इट विल अटैक द इंटायर सी लाइन. तो इसका मतलब कितना हुआ? C1 C2 so on so forth till C8. राइट. सिमिलरली ये इस पूरी लाइन को भी अटैक कर रहा है, तो इस पूरी लाइन को अटैक करने का मतलब क्या हुआ? कि A3 B3 so on so forth till H3. राइट. तो इन सारे स्क्वायर्स को मेरे को हटाना पड़ेगा. राइट. कोई मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ बी? कितने एलिमेंट्स हैं बी में? कोई बता पाएगा? 15. नहीं, कार्डिनैलिटी ऑफ बी. 49. 49. So this will be 64 minus
15, right? Because you're getting rid of the 15 squares. So this is 49 right here, right? अगेन मैं एक सेट लिखता हूं. आपको क्या करना है? आपको दो स्क्वायर्स पिक करने हैं, है कि नहीं? सो लेट मी राइट इट लाइक दिस. आई विल से a क्रॉस b इज नथिंग बट अ टुपल ऑफ साइज 2. तो ये पहला प्लेस हुआ p1, ये दूसरा प्लेस हुआ p2, such that p1 belongs to a and p2 belongs to b. ठीक है? आपको ये एक स्क्वायर पिक करिए. कैन आई पिक अ स्क्वायर? कैन आई क्रिएट अ टपल विच इज समथिंग लाइक दिस? ऐसा कुछ टपल क्रिएट कर सकता हूं. a1 कॉमा b2 कर सकता हूं ना. ये मैंने अगर टपल क्रिएट किया तो ये वैलिड टपल, मतलब ये अगर मैंने एक रुक को a1 पे प्लेस कर दिया, दूसरे को b2 पे प्लेस कर दिया, तो दोनों आपस में एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे. सो इट्स अ वैलिड टुपल, राइट? एंड आई होप यू कैन कम अप विद अदर टुपल्स एज वेल. ठीक है? नाउ जैसे ही आपने ये समझ लिया कि यू कैन मॉडल इट लाइक दिस, तो इसका मतलब ऑल यू आर थिंकिंग अबाउट इज द नंबर ऑफ सच टपल्स विल बी माय आंसर. सो दिस विल बी नथिंग बट द कार्डिनैलिटी ऑफ a क्रॉस b. तो ये क्या हुआ? कार्डिनैलिटी ऑफ a इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ b, which is nothing but 64 into 49, right? Whatever that comes out. Is it clear to everyone? किसी को कोई डाउट है? हेलो? सर वही क्वेश्चन में दो व्हाइट रूक्स या दो ब्लैक रूक्स बताया तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना है ना सर? दो वाइट रुक कैसे होंगे? वो तो नॉर्मल चेस में हो गया ना. ओके, मतलब मीन्स हाँ, दोनों अगर सेम दो कलर का है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा सर. नहीं, अगर वो प्रॉब्लम को तुम्हें थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा कि फिर पहले तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा. जैसे तुमने शायद ये सुना होगा, 8 क्वींस प्रॉब्लम सुनी है कि क्वींस को तुम 8 क्वींस को तुम चेस बोर्ड पे रख रहे हो सच दैट नन ऑफ देम अटैक ईच अदर, राइट? तो उसमें फिर फर्क नहीं पड़ता कि क्वीन किस रंग की है. समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब क्वीन को आपस में अटैक नहीं करना चाहिए. तो तुम्हारा ये क्वेश्चन बनना चाहिए था ऐसा कुछ कि तुमने चार रुख रखे हैं सच दैट नन ऑफ देम अटैक ईच अदर. ठीक है? तो अगर वो क्वेश्चन होता तो उसको अलग तरीके से थैंक यू करना सर. होता. सो इंस्टेड ऑफ p1 p2, हाँ मतलब वो ऐसा ना होता. ठीक है? Alright, ठीक है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. किसी को कोई डाउट है? गाइस कैन आई मूव ऑन? yes. ठीक है, लेट्स डू दिस. The smallest number which divides this particular thing. So I'll begin accepting answers. So amongst these options, which is the smallest number that should divide this? Okay, another 2 minutes.
Okay, so I see a lot of people have converged to one particular answer. This usually happens a lot. All right, great. So we've exhausted our time. Uh, रिवील करता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया है आई शुड हैव डन अ बेटर जॉब ऑफ क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बट आई दिस वाज मोर ऑफ अ एजुकेशनल क्वेश्चन मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन से दैट्स व्हाई आई पुट अप दिस क्वेश्चन अदरवाइज अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें और समझें तो इसका आंसर निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होना चाहिए था बी सी दोनों ही डिवाइड करेंगे लेकिन सबसे छोटा जो होगा वो 5040 होगा 5040 में स्पेशल क्या है कोई बता सकता है व्हाट इज 5040 7 7. factorial. दिस इज 7 फैक्टोरियल राइट आई थिंक दिग्नेश वाज द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ दिग्नेश आप बताएंगे कि आपने कैसे किया है या n कोई भी जरूरी multiplication of any n consecutive natural number is always divided by n factorial. very good very good so this was the fact that I wanted to put forward do you know the proof of this No. okay the n consecutive numbers or rather not the but n consecutive numbers are divisible by n factorial right so this was the idea so आप थोड़ा बहुत टेस्ट भी कर सकते हैं कोई भी n numbers लीजिए n consecutive numbers लीजिए वो हमेशा n factorial से divisible होंगे राइट तो मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ ले लिया 2 into 3 into 4 into 5 राइट सो इसको 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होना पड़ेगा राइट ऐसा क्यों है लेट्स लुक एट इट let's try and prove this thing real quick अगर आप ध्यान से देखेंगे so the numbers that I had was what let me call this x right so the numbers I had was क्या थे 2011 से थे ठीक है so 2011 into 2012 2013 so on so forth till 2017 ठीक है अब मैं क्या करूंगा I'll write it like this I'll do a multiplication of the remainder of these things तो ये कितना हो गया 2010 तो जितने भी मिसिंग थे मैंने उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सो वी मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइडेड अगेन ऑलराइट सो ऊपर क्या हो गया मेरे पास ऊपर मेरे पास हो जाएगा 2017 फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा 2010 फैक्टोरियल है कि नहीं क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं लिख सकता हूं ऐसा है ना ये नंबर क्या है कोई कभी देखा है आप लोगों ने ये नंबर पहले दिस इज व्हाट 2017 P7. एग्जैक्टली दिस इज 2017 P7 क्या ठीक है तो बेसिकली कैन आई से दैट दिस इज एन इंटीजर राइट ये एक इंटीजर वैल्यू है ना है कि नहीं सो दैट इज व्हाई द आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल right so any n consecutive numbers are always divisible by n factorial 7 fact matlab n consecutive numbers are always divisible by n factorial all right ठीक है any doubts anything all right shall we look at another question
ठीक है, let's look at this particular question. The number of ways to answer 10 MCQ questions such that each question has 4 options and every question can take only one response. So for this I will put up only 1 minute क्योंकि ये easy question है और जिसका होना होगा वो पहले 1 मिनट में ही हो जाएगा. All right. So I think I should reveal the answer here. Uh, ना काफी होगा. The answer is 4 to the power 10. Right. Now, I want you guys to be very honest, and I want so I know a lot of people do get into this trouble of saying, okay, the answer could be 4 to the 10 or it could be 10 to the 4. Right. So if you're one of those guys that you're still confused between it, right? Maybe you have given the right answer here, but you're still confused that I could have opted for this as well. So is there anyone who is confused about which one should have been the right answer? कोई है ऐसा जिसको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो कि 10 to the power 4 होगा या 4 to the power 10 होगा? डेफिनेटली आंसर इनमें से कोई एक था, राइट? सो ये कंफ्यूजन काफी बच्चों को रहता है. इस वजह से आई जस्ट वांट टू एड्रेस this right here. Does anyone have any confusion, or is it very trivial for you and I should move on? हाँ, थोड़ा भी confusion हो तो बता दो. I have a very good way of solving this particular question. कुशागर एक बार एक्सप्लेन कर देना. अच्छा, ठीक है, चलो देख लेते हैं. This is question number 3 here, right? No, this is question number not 3, but this is question number 4 rather. ठीक है. Acha, before I go ahead and do this question with you guys, I want to quiz you on few things, right? So let me ask you this particular question कि मेरे पास दो सेट हैं. सेट ए में मेरे पास मान लो n एलिमेंट्स हैं और सेट बी में मेरे पास r एलिमेंट्स हैं. I am trying to create a function from a to b. तो क्या तुम बता सकते हो कितने फंक्शंस होंगे a to b में? So the question here is the number of functions from a to b. So this is R की R power n. R power n. r to the power n, right? कैसे किया आपने, कोई बता सकता है? Each What did element you do? has R choices, 1 Exactly. to 3 up to n. The first element has R options in B. Second element has R options in B. All right. So R Very, into R. very good. Exactly. R into R. What's your name again? Can you tell me what's your name? Kritika. Kritika. Okay. Kritika, can you tell me one thing here? Can you define function for me? What does a function mean? A function is a mapping from one set to another, from the domain. Okay, wait. A function is a mapping from one set to another set such that each element of the first set is mapped to a unique element of the second set. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yeah, Yes. that's All it. right. That's it. That's it. Very good. So
what I'll do is I'll leverage whatever she said, and I'll solve all these questions using this paradigm, right? So let's try and do this. Okay. In order to so the answer to this will be the following. Let me just quickly go over the answer to this question. So the answer is कि ये पहली जगह है, ये दूसरी जगह है, ये तीसरी जगह है, so on so forth, ये nth जगह है. पहली जगह पे आने के कितने तरीके हैं? So this guy one could map up to any of these are possibilities. So you have R of these possibilities here. Two के पास भी R possibilities हैं. So you have R of the R possibilities here, R here, and so on and so forth, R here. So totally कितने functions ऐसे बना पाओगे? So the answer will be R to the n. All right, very straightforward. Now let me put up another question here, right? So, and I think you would have seen this question somewhere as well. मान लो you have so the number of subsets of size n. The number of subsets of size n. What is the answer here? कितने होते हैं? Do you guys remember? 2 power 1000. n. 2 to the power n. Right. Now, Hello. let's see how can I get an answer to this using this particular formulation. n power Right. n. So I would say A में B में. Right. So I have n elements. 1 2 3 4 5 so on so forth till n. मेरे पास n elements है set A में और B में सिर्फ 2 elements हैं. Right. और इन 2 elements को मैंने कुछ ऐसा ले रखा है. एक को 1 ले लिया, दूसरे को 0 ले लिया. Right. अब मैं क्या कह रहा हूं? I want to figure out the number of subsets. तो कोई भी चीज जो 1 से अटैच होगी तो that is going to create a subset, और जो चीज 0 से अटैच होगी that is not going to create a subset. Alright, so let me explain this to you. मान लो एक फंक्शन में ऐसा बना सकता हूं इसमें, है कि नहीं? अब मैंने ये फंक्शन बनाया, कैन एनीवन टेल मी क्या सबसेट को ये करस्पॉन्ड कर रहा है? What subset is this thing corresponding to? Set itself. The set itself. Very good. So this particular thing will be the set itself. Right? सारे elements. Okay, let me do one more example here. Let's say I have 1 2 3 4 so on and so forth till n, and I have 1 here, I have 0 here. I'm attaching two things here and I'm doing everything to 0. Can anyone tell me what is the subset that this corresponds to? बताओ. What will be a subset that this thing would correspond to, this functional map would correspond to? One, two, and rest not there. So 1 2, so this will be the subset. Now can I say the following line? Can I say that the number of subsets from A to B, or number of subsets of A, is equal to the number of functions from A to B? Does that make sense? If this makes sense for you, please say yes. Right? Whatever functional map I'm creating from A to B, that will correspond to a subset. Right? जैसे ये एक फंक्शन बनाया पहला वाला, तो ये सबसेट बना. दूसरा वाला फंक्शन बनाया तो ये सबसेट बना. राइट? तो कोई भी फंक्शन में ए से बी के बीच में बनाऊंगा, कोई भी एक जो फंक्शन बनाऊंगा वो कोई ना कोई सबसेट को करेस्पॉन्ड करेगा. राइट? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? हेलो. Hello, sir, but Hello. do we say that B has 2 elements, or like how are you equating these two? No, what I'm trying to do is I'm trying to create a function. Right? मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें सेट ए में मेरे पास n एलिमेंट्स हैं और सेट बी में दो एक फैंसी चीजें रख रखी है मैंने. एक ये 1 है और एक ये 0 है. 1 से कभी भी कोई चीज अगर अटैच होगी तो उसका मतलब ये होगा कि वो सबसेट बनाने में जाएगी, और 0 से अटैच होगी तो वो सबसेट बनाने में नहीं जाएगी. ठीक है? तो देखो तभी जब मैंने सेकेंड केस में 1 2 को 1 से अटैच किया तो वो सबसेट बना गया, और बाकियों को मैंने Okay, 0 okay, से got अटैच it. किया तो उसने कुछ नहीं बनाया. नाउ एज एन एक्सरसाइज कैन यू टेल मी 5 कैसा दिखेगा? अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना है
तो उसके लिए मैं क्या मैपिंग क्रिएट करूं? All Yeah, every attachments. एवरीथिंग गोज टू जीरो, राइट? ठीक है, एवरीथिंग गोज टू जीरो। वेरी गुड। तो आप बता पाएंगे नाउ, सिंस एवरीथिंग गोज टू जीरो। अच्छा, आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ठीक है, कि कोई भी फंक्शन तुम ए से बी में बनाओ दैट करेस्पॉन्ड्स टू अ सबसेट। सिंस इट करेस्पॉन्ड्स टू अ सबसेट, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 2 to the power n। क्यों? बिकॉज बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, और ए में कितने एलिमेंट्स हैं? n। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is this example clear? I'm going to build Yes. on it now. Very good. अब Just हमारे पास one doubt. क्वेश्चन। Yes, go ahead. Go ahead. Basically, this statement is valid only when we have two elements in B. Sorry, I lost you in This between. statement is valid only when we have two elements in B. Yes. So Yeah, this that's statement, the no. The thing is, I had a problem in the hand. I never had this thing to start off with. I had a problem in hand which was saying that if a set contains n element, tell me what are the number of subsets. This was what my problem was, right? I thought I can easily model it into something like this, where I can say set A contains n elements and set B contains two elements, 1 or 0. All right. Now, if and how did I model it? I say if anything goes to 1, that means that it creates a subset. And when I started creating certain subsets, it made sense that it will exhaust all the possibilities. So hence the answer is this. Now, I'll give you. So the question that we had looked at was this: the number of ways in which 10 MCQ questions, such that each question has 4 options and every question can take only one of the responses, right? So कितने तरीके से you can say fill up the MCQ or your OMR, right? तो अब इसे फंक्शनल तरीके से करना है मुझे। बताओगे A में क्या जाएगा, B में क्या जाएगा? Can anyone tell me what should go in A and what should go in B? the number of questions would belong to A, and number of choices would belong to B. And why would you say this? Why not options are here and the other thing is there? क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। Exactly, very good, nice answer. क्योंकि हर क्वेश्चन को 4 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब याद करिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी कि हर एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड टू अ एलिमेंट इन बी, राइट? अगर आपने मान लीजिए उल्टा कर दिया होता, मान लीजिए आपने ऐसा कुछ कर दिया होता जहां पे ऑप्शंस ये हैं, से मान लीजिए ए बी सी डी, और आपने क्वेश्चंस यहां भर दिए होते, मान लीजिए अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया होता, तो ऐसा हो सकता है ना कि हर एक का आंसर ए हो गया। तो अगर हर एक का आंसर ए हो गया तो ये फंक्शन बनता, बट ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट ऑफ मतलब हर एलिमेंट ऑफ ए को कनेक्टेड होना चाहिए था बी से। सो दैट्स व्हाई जब भी हम इन प्रॉब्लम्स को इस फॉर्मुलेशन से सॉल्व करेंगे, तब आपको ध्यान में रखना है कि ए में क्या आ सकता है और बी में क्या आ सकता है। तो ए में क्या आएगा? हमेशा ए में हमारे पास सवाल आएंगे, सॉरी हाँ, ए में हमारे पास सवाल आएंगे, क्योंकि हर सवाल को आंसर करना जरूरी है, कोई ना कोई एक रिस्पॉन्स होना जरूरी है। और बी में क्या आएगा? मेरे पास रिस्पॉन्सेज आएंगे, तो बी ये हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम है ए में 10 एलिमेंट्स हैं और बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कितने फंक्शंस बनेंगे ए से बी में? कोई बता सकता है? 4 to the power 10. 4 to the power 10, राइट? तो आप देख, सो आंसर शुड हैव बीन 4 to the power 10 एंड नॉट 10 to the 4। ये गलत। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं जस्ट टू सॉलिडिफाई दिस। से यू हैव 4 एनवेलप्स, ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे आपने। So you have 4 envelopes and you have 5 letter boxes. Right? You have 5 letter boxes. The number of ways in which you can post these 4 envelopes in 5 letter boxes, such that any letter box can contain any number of letters. तो आप क्या आंसर होगा इसका? 4 to So the power. 5 to the power 10. या 5 तो to the 4 power to the 4. power 5 होगा या तो 5 to the power 4 होगा, है ना? इनमें से कौन सा होना चाहिए?
5 की पावर 4. 5 to the 5 power 5 to the power 4। ठीक है, अब अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि आप सेट थ्योरेटिक सॉरी इस फॉर्मुलेशन से देखिए। तो अगर आप इस फॉर्मुलेशन से देखेंगे तो ए में क्या आना चाहिए? envelopes. एंड एनवेलप्स आने चाहिए। क्यों आनी चाहिए एनवेलप्स? क्योंकि हर एनवेलप को पोस्ट होना है, राइट, इररिस्पेक्टिव। तो हर एनवेलप को पोस्ट होना है, तो ए में वो आ जाएगा और बी में क्या आ जाएगा? लेटर बॉक्सेस। ठीक है, तो आपके पास बी में लेटर बॉक्सेस आ गए। अब कोई भी फंक्शन आप ए से बीच में ए टू बी अगर आप कोई भी फंक्शन क्रिएट करेंगे, दैट विल करस्पॉन्ड टू अ वे, राइट। सो इसका आंसर कितना हो गया? नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, कितना हुआ? 5। सो इसके पास 5 है, तो 5 पर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा समझ में आया आप लोगों को? एनीवन हु still has any problems with this? Next question is going to be extremely hard, right? So next set of questions और यही idea approach use करेगा, so you should be very clear on this, right? एक और question मैं देता हूँ, let's see if you have understood One this. doubt, are the problems related to rearrangement also in this concept? Maybe those problems are also solved with this concept. So dearrangement I haven't actually taken up because of the time thing, but I can if you're looking for dearrangement kind of problems, I can after just stay after the session, I will post, I'll give you some questions on dearrangement and that could perhaps satisfy. Otherwise matlab, dearrangement is a slightly harder topic for PGDBA, matlab aa bhi sakta hai, but not so much. Okay. ठीक है, matlab if you want dearrangement kinds of questions, just stick around after the class. I'll post up some questions on that. All right. Sure. Yeah, great. Let me do one quick question again. So you have 15 students. ये भी काफी common question है, आपने बहुत देखा होगा। सबका birthday is, so all of them have their birthday in the month of June. In the month of June. Of June. The number of ways in which they can have their birthdays. कोई बता सकता है? क्या आएगा इसका आंसर? 15 students, सबका birthday जून में होना है। आंसर 30 क्या होना power चाहिए? 15. 30 to 30 the पर power 15. 30 to the power 15। अगेन सेट ए में क्या जाएगा मेरे पास और सेट बी में क्या जाएगा? Set What M should go? student. सेट ए में स्टूडेंट्स आएंगे। At सेट ए A में would be स्टूडेंट, students and B. हाँ, क्योंकि हर स्टूडेंट का बर्थडे होना जरूरी है। नहीं सॉरी, दिस इज डेज, सो डे 1, डे 2, डे 3 till day 30. The number of functions from A to B would be your answer. So this is 30 power 50. All right, great. So I hope this settles it for you. मतलब अब आपको ये नहीं, मतलब आपको डर नहीं लगना चाहिए कि 15 पार 30 कब होगा या 30 पार 15 कब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। All right, now let's up the ante. This is not a easy question. I will give good 5 minutes to this. Okay, I've gotten a response from Akshay. All right. What is set A here? Uh,
Set A is this thing. Sorry, I should have written this. Set A is this. मैं ये लिख देता हूँ. Sorry. Set A is this. Yeah, sorry. Thank you for pointing it out. Set A is this. Again, you would have to put up an integer. ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना. अगर आपने पहले कर रखा है तभी आप इसको फटाफट कर सकते हैं. तो जिन्होंने आंसर दिया है वो, अगर तो आपने पहले क्वेश्चन देख रखा है देन इट्स फाइन, अदरवाइज थिंक अबाउट इट अगेन, क्योंकि 2 मिनट में होने वाला नहीं है ये सच इतनी जल्दी. Okay, last 40 seconds. ठीक है, देखें आंसर क्या है. Let's see if anyone got it right. The answer was 122, right? And Deb and Surya got it right. All right, very good. If you got it right, you are very good at combinatorics, right? So um, uh, it's not an easy question at all. It's a play on one of the IIT past year questions. उसमें instead of 5 एलिमेंट्स उसमें 4 एलिमेंट्स थे, राइट. और वो A1 A2 A3 नहीं थे, वो those were 1 2 3 4, right? So I had created this question on that, and if you got this question right, then you actually, you know, are very good at combinatorics, I would say this, right? So Deb or Surya, if
you're willing to share what did you guys do? I mean, Yeah, so basically I just remember the formula, which is, I mean, oh, just finding the a n number of minus 1. yeah, unordered disjoints. So it's 3 power n plus 1 by 2, but I'm not exactly sure how it is. Why do you remember this formula? It's very weird that, it's not a very Yeah, common formula to remember. yeah, sets and relations, right? In general, we just try to remember as many formulas as possible. So that's when I just remembered this. Okay. Okay, Surya, you want to take a shot at this? Maybe you know how did you go about this? No? All right, great. So what I'm going to do Yeah, here, sorry. bolo. So why not can we do it like this? Each of the five elements have three options, B, C, or none of them. So 3 power 5. हाँ, 3 power 5 is a good guess, but इसमें आप ध्यान से देखिए, he is also talking about unordered pairs, So I right? don't So know what that's that means actually. you don't know what an unordered pair is? Okay, I'll explain the No, no. question. Okay, wait a minute. Right. So let me set it up nicely. Right. So this wasn't an easy question, so don't be hard on yourself. बिल्कुल ही normal question नहीं है ये. Right. So question says the following कि आपके पास A एक set है जिसमें 5 elements हैं. आपको दो subsets बनाने हैं इसके. Right. So you are creating two subset. एक subset B है और दूसरा C है. अच्छा ये सबसेट्स कैसे बनाने हैं? ये सबसेट्स ऐसे बनाने हैं सच दैट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है. कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं? मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे 1, सॉरी 1 नहीं मतलब A1, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ले सकता हूँ A2. क्या ये एक वैलिड पिकिंग होगी? इज दिस अ वैलिड पिकिंग? Yes. Yes. नाउ व्हाट Yes. डू आई मीन बाय कंसीडरिंग अ अनऑर्डर्ड पेयर? तो अनऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने ए में बी में ये पिक कर लिया था और सी में आपने ये पिक कर लिया, तब आप ये नहीं पिक कर सकते. यू कैन नॉट डू दिस. इज दिस क्लियर? But they are both different sets, right? They're B and C. हाँ, that's why they are saying B and C are unordered, right? So B and C, the pair that you're picking are unordered. That is what the question basically says. These B and C are unordered pairs, so you cannot order them. Do you get it? Is that why in Okay, that fine. Then the formula which, answer will be half. No, the yeah, answer half. wouldn't be 3, half. 3 The power answer 5 by wouldn't be half. plus No, like 1 because 3 of the power n void. minus 1 by 2 is because of that unordering thing. Because of that. Because of this unordering thing, that's why in the formula he's dividing by 2, right? Yeah, I'll come to that, but that's not the. Still, it's not Okay, there. okay. Okay, Yeah, okay, just sorry. sit right. Right. So if you have this thing, if you have this particular thing, you cannot have this. Does do you guys understand what do I mean by an unordered pair now in this particular question? All right. Now, what I would do here is एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं यहाँ पे. ऐसा भी ले सकता हूं ना मैं. आई कैन से यहाँ पे मेरे पास 5 है और यहाँ पे मेरे पास कुछ भी हो सकता है. मान लो ये हो गया. Is this a valid picking? Yes, sir. Is this a valid picking? No, sir. नहीं, क्यों? It's a valid, right? The It's a meaning valid is picking, 5 right? It is a valid picking, है ना? Now what I will do, अभी मैंने आपको जो ऊपर एक तरीका बताया था ना कि नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट करके हम कैसे चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, वही तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा. सो देखिए, I would create a Venn diagram here. I would say the following. चलिए वेन डायग्राम नहीं बनाता. लेट मी मेक इट कीप इट सिंपल. मैंने एक सेट बनाया ए और मैंने एक सेट बनाया बी. ए सेट में मैंने रखा A1, A2, A3, A4, A5 और बी में मैंने रखा ओनली बी, सॉरी ओनली ए, ओनली बी. ए बी नहीं रखता मैं, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ. ए डैश और बी डैश. ठीक है, तो मैं इसको रखता हूँ ओनली ए डैश, ओनली बी डैश, राइट, एंड आउटसाइड ऑफ ए डैश एंड बी डैश. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए
और ए यूनियन बी, ए डैश बी डैश का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो मेरे पास तीन ऑप्शंस है। हर हर एलिमेंट जो ए, मतलब हर एलिमेंट जो ए में है उसके पास तीन ऑप्शंस रह गए। या तो वो ओनली ए में जाए, मतलब ओनली ए डैश में जाए, मतलब वो यहां जाए बस। या तो वो ओनली बी में, बी डैश में जाए। या तो वो आउटसाइड ऑफ ए यूनियन ए डैश बी डैश जाए। ठीक है, ए डैश, चलो ये कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट मी क्रिएट वन थिंग, लेट मी एक कोई मैं बनाता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन मैंने बनाया है ये। ठीक है, लेट मी पिक अनदर कलर। So one question. हाँ हाँ बोलो। A dash is a complement, right? Like, नहीं, अच्छा, लेट मी से नॉट से डैश, मेरे को लगा ही था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेट मी से दिस इज एल एंड दिस इज के। ठीक है, अब ठीक है, इज इट क्लियर? no, not clear. Like, what is L? Like, which set is L? So I'm saying, you know what a Venn diagram is, right? Venn Yeah, yeah. diagram देखा है आपने? तो ये एक सेट है L, ये एक सेट है K। ठीक है, ये Venn diagram है, ये L है, ये K है। Nothing fancy। ठीक है, Oh, okay, okay. Only L. Okay, got it. Yeah. ओनली L वाला हिस्सा कौन सा हुआ? ये वाला हिस्सा हुआ ना ओनली L। Yeah, L minus L intersection K, right? यस, Yeah. सो दिस इज ओनली L। ठीक है, ये वाला सेक्शन कौन सा हुआ? ओनली K। Only K. Okay, got it, sir. Thanks. राइट, और जो आउटसाइड ए यूनियन, सॉरी एल यूनियन के कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ये हो जाएगा, है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो एलिमेंट्स है तुम्हारे पास ए में, इनके पास यही तीन ऑप्शंस है। या तो वो एल ओनली एल में जाए, या तो वो ओनली के में जाए, या तो वो बाहर चले जाए। ठीक है, मान लो मैंने ये बना दिया, तो तुम मुझे बता सकते हो बी एल में तुम्हारे पास क्या है? एल में ये हो गया A1 A2। ठीक है, सॉरी A1 A2 A3। ठीक है, और के में क्या हो गया? A4 A5। Can you see that L and K are L intersection K is equal to 5? Can you see this? Yes, yes. Right? Now, can I say any function that I create from A to B will give me, so any function from A to B implies that L intersection K is equal to 5? है कि नहीं? How many of you have understood this? It might not be very straightforward, but if you have understood this, please say yes or write a yes. Does this make sense? कोई भी फंक्शन आप बना लीजिए a से b के बीच में, उसमें आप देखेंगे L इंटरसेक्शन k इज इक्वल टू 5, है कि नहीं? Yes. है ना? Yes, sir. अच्छा, पर इसमें तो कितने फंक्शंस हुए मेरे पास टोटल? 3 पावर 5, है ना? 3 पावर 5 मेरे पास टोटल फंक्शंस हो गए। लेकिन आप क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यू शुड हैव अनऑर्डर्ड पेयर्स। तो अनऑर्डर्ड पेयर्स होने का क्या मतलब हुआ कि जितने आपने, अगर आपने L को एक बार ये लिखा था और K को एक बार ये लिखा था, तो जब आपने नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट किया तो एक बार ये भी चला गया होगा और इसमें ये चला गया होगा, है कि नहीं? जब आप नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये भी तो हो सकता था, isn't it? So you would have to get rid of these things, get rid of these cases. But mind you, one of the functions that you have is the following, कि सारी चीजें are going to attach to L union K L union K whole complement। ये कौन सा ये कौन से मतलब अगर ऐसा हुआ तो L और K क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? If everything goes and attaches to L union K, तो मतलब B और C क्या होगा, कोई बता सकता है? 5. Phi and phi, 5. Both will be null. phi and phi, both of them are phi। लेकिन phi और phi तो सिर्फ एक ही बार आएगा ना, ये दो बार थोड़ी आएगा, है कि नहीं? Are you getting this point?
5 comma 5 will only come Yes, once. yes, It got will not come twice. So that's why you will get rid of 1 here, right? Now, once you get rid of this particular 1, now whatever number that you have, both of them have been counted twice. So if you have counted this, then there is a setting that you have counted this. So अब क्या करोगे तुम? 2 से divide कर दोगे. ठीक है? लेकिन notice 5, 5 is a valid picking as well. तो since 5, 5 is valid picking, तो इसको तुम add back कर दोगे. Right? What is this one? This one belongs to 5, 5. So the final answer will turn out to be 3 to the power 5, 3 to the power 5 minus 1 divided by 2 plus 1. So this comes out to be 3 to the 5 plus 1 by 2. ठीक है, तो ये आंसर हुआ. तो जो उसने फॉर्मूला रटा हुआ बोला था ना, आई थिंक डेब था या कौन था, आई एम नॉट श्योर, दैट इज व्हाट ही वाज पॉइंटिंग आउट. सो दिस इज द प्रूफ. अगर n 5 की जगह n होता तो ये आंसर आ जाता. इज इट क्लियर? थोड़ा मुश्किल है. आई विल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा जिसमें जिसमें आई गो थ्रू द प्रूफ वेरी सिस्टमैटिकली. यहाँ पे मैंने थोड़ा तेजी से बोल दिया क्वेश्चन सोल्यूशन, बट इट शुड मेक सेंस अगर आप थोड़ा टाइम इस पे स्पेंड करेंगे. एंड इफ यू हैव हर्ड व्हाट आई हैव सेड, this is perfectly the right way to go about the question. Any doubts before I move on? Hello. Yes. Could you please explain that part in which you're subtracting one, saying 5 comma 5 Sure. subtract कर रहा हूँ. Does this make sense to you कि सब कुछ अगर L union K का whole complement में चला गया तो मतलब B और C जो मेरे पास बनेगा वो 5, 5 बनेगा. इतना समझ में आ गया था आपको? हाँ हाँ हाँ. तो जब 5, 5 देखो, जब तुमने L को ये लिया था और K को ये लिया था, तो जब तुम नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट कर रहे हो तो एक बार उल्टी चीज भी कैलकुलेट हो जाएगी ना. मतलब एक बार अगर L ऐसा था और K ऐसा था, तो जब तुमने नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट किए तो उल्टा एक बार और हो जाएगा. तो इस वजह से तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से. लेकिन जब तुमने 5, 5 लिया है ना, तो उसको 2 बार नहीं कैलकुलेट किया है, उसको सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट किया है. समझ रही हो? सो दैट्स व्हाई यू वुड हैव टू गेट रिड ऑफ दिस 5, 5 और फिर तुम डिवाइड करोगी बाय 2. इज इट क्लियर? क्योंकि 5, 5 सिर्फ एक ही बार आया है ना, ये 2 बार आएंगे क्योंकि ये एक बार इधर चला जाएगा, एक बार उधर चला जाएगा. दैट्स व्हाई. पर तुम इसे एक बार और ऐड बैक करोगी. और ऐड बैक क्यों करोगी? क्योंकि 5, 5 इज अ वैलिड पिकिंग, वो आंसर में होना चाहिए. ठीक है? Deb, do you understand the proof now? Yes. Understood. Great. So this is one of the harder questions, right? ठीक है. Moving on. All right, another good question. You perhaps would have seen this. The number of shortest paths from 0, 0 to 5, 5. By the way, when I'm taking saying shortest path, I want paths in a Manhattan distance manner. Right? So Manhattan distance ये होता है. Just bear with me. मैं एक बार क्वेश्चन समझा दूं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा मिसअंडरस्टूड हो जाता है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप 0, 0 पे हैं और आपको 5, 5 पे जाना है. तो what are the number of shortest paths? Number of shortest paths. Someone is unmuted. Please mute yourself. Please mute yourself. என்ன ஃபங்க்ஷன் Akash, are you there? Santosh, kindly unmute. Santosh. Santosh, kindly mute it. अरे ठीक है, थैंक्स. सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 0, 0 से 5, 5 पे जाना है, राइट? और कुछ इस तरीके से जाना है, मतलब शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढना है आपको, राइट? तो मतलब आप ये सब नहीं कर सकते. आप ऐसा नहीं जा सकती. आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, ये सब नहीं करना. शॉर्टेस्ट पाथ जाना है, राइट? जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो लेना है हमें.
तो शॉर्टेस्ट पाथ लेने का मतलब क्या हुआ, आपको हमेशा एक मैनहट्टन वे में जाना है, और जिस जैसे मैं एक शॉर्टेस्ट पाथ लिखता हूँ, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ठीक है, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ठीक है। तो मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कहने का मतलब है या तो आप ईस्ट में मूवमेंट कर सकते हैं या तो नॉर्थ में मूवमेंट कर सकता है, आप साउथ में नहीं कर सकते और वेस्ट में नहीं कर सकते। So if you are going from 0, 0 to 5, 5, you can either go east or you can either go north, but you cannot go anywhere else, right? From a particular point. Is the question clear to everyone? कोई doubt है सवाल में? No. All right, great. So take 2 minutes and try and come up with the answer. So I'll put up 2 minutes. चलो okay, okay, let's see. uh, shall I reveal this? Okay, the answer is 252, right? A lot of you got it right. Uh, and most of you, if you have gotten this right, perhaps you would have seen this question as well, right? Because अगर कोई आदमी ये पहली बार क्वेश्चन कर रहा है तो यूजली से जरूरी नहीं है that he or she can come up with the correct answer. If you have gotten it right, I'm sure आपने किसी ना किसी फॉर्म में तो इसको पहले पढ़ा होगा, right? Again, this question wasn't to test you per se because it's a very easy question. The idea was to, it was more on the educational things that कि ऐसे questions को किया कैसे जाता है. All right. So let's quickly go ahead and okay. Before I do that, anyone wants to jump in and say how did they go about this question? I Anyone? can do that. Yes, yes, yes. Go ahead, please. So we have 10 Hello. things, 5 ups and 5 arrange them in 10 factorial ways, but we have 5 and 5. Both are sets of 5 and 5. So the answer comes out to be 10 factorial by 5 factorial into 5 factorial. Very good, very good. So, of course, whatever she said was completely fine. So let me do this thing. Okay, so the idea here is one thing that you would have to see when you solve this question is कभी भी ये question solve करो तो सबसे पहले कुछ paths बना लो. तो पहला path ये हो गया, ये वाला एक path था, ये दूसरा path था, एक path ऐसे भी हो सकता था, right? कोई भी पाथ लो यू विल रियलाइज कि तुम्हें हमेशा 10 स्टेप्स ही लगेंगे 0,0 से 5,5 तक जाने में. सो दिस इज द इनवेरिएंट दैट यू वुड हैव टू थिंक अबाउट कि हमेशा 10 स्टेप्स ही लगेंगे 0,0 से 5,5 पहुंचने में, राइट? अब ये 10 स्टेप्स किस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एन और ई में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? तो कोई एक पाथ लेता हूं, मान लो मैंने ये वाला पाथ लिया,
तो अगर मैंने लास्ट वाला पाथ लिया तो देखो मैंने सबसे पहले क्या लिया, ईस्ट 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 और ईस्ट, यानी 5 ईस्ट लिए। फिर अब मैं सारे नॉर्थ लेता जा रहा हूँ, नॉर्थ 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 नॉर्थ। यानी कि अगर मैं कोई भी परम्यूटेशन ले लूं इसकी, right, that will be a shortest path from 0 to 5 5. So the number of permutations of this will be nothing but 10 factorial divided by 5 factorial 5 factorial, right? तो एक तरीका तो इसको करने का ये है, this is nothing but 10c5, 10c5 is equal to 252. बट माइंड यू माइट रियलाइज कि ये 10c5 आया, हमें तो मालूम है 10c5 क्या होता है, यू हैव 10 थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू पिक 5 ऑफ देम। तो क्या मैं इसको किसी और तरीके से भी कर सकता था? सो यस, देयर इज अनदर वे टू डू इट। सो द अदर वे टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड हैव बीन कि देखो तुम्हें हर बार 10 स्टेप्स तो लेने हैं, राइट? और तुम्हें ये भी मालूम है कि दो ही किस्म के स्टेप्स ले सकते हो, या तो नॉर्थ या तो ईस्ट। तो तुम क्या करोगे, कोई भी 5 स्टेप्स उठा लोगे इन 10 में से। तो कितने तरीके से उठा सकते हो, 10c5 से कोई भी 5 उठा लिए। मान लो मैंने ये उठाया, ईस्ट 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 और ईस्ट, ठीक है। अब जो ये बाकी जगह रह गई हैं उनको मैं किस तरीके से भर सकता हूँ, कोई बता सकता है? कोई सिर्फ एक ही तरीका है ना उसको भरने का, कि मैं उसमें नॉर्थ डालूं, और तो कोई तरीका ही नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई द आंसर कैन आल्सो could have been 10c5 into 1. Is this clear to everyone? किसी को कोई डाउट है? हेलो? This is not clear for me. Can you please? हाँ. So which part is not making sense? Did you at least understood that you will always take 10 steps no matter what? Does this make Yes, sense? that was clear. Yeah, ठीक है. yeah. Now if you look at this particular path that I've taken, where my cursor is, so I'm going from 0, so मैं यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, and then I take all the north steps. अगर मैं Yeah, उसको got it. लिखूंगा तो ऐसा कुछ लिखूंगा ना, E and N, ऐसे ही लिखूंगा ना मैं, if I would have to write these movements down, है कि Yes, नहीं? correct. Yeah. तो अब इसको देखो, can you see any permutation of this will lead you to 5, 5? फ्रॉम 0, 0 से मान लो एन एन, मैंने ये स्टेप लिया, मान लो ये किया मैंने, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको ऐसा कर सकता हूँ, एन 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 एन, और फिर ईस्ट ईस्ट ईस्ट, है ना? तो कैन Yeah, यू yeah. से ये इसकी परम्यूटेशन ही तो हुई ना? Correct. Yeah. तो Yeah, I मैं can बस say ये it's a जानना चाह permutation. रहा हूँ कि कितनी परम्यूटेशंस होंगी इस स्ट्रिंग की। अगर मैंने इसको कोई एक स्ट्रिंग मान लिया तो कितनी परम्यूटेशंस मैं इसकी Oh, बना सकता okay, okay, got it. Okay, हूँ? सो then दैट it's डजंट 10 factorial by. Okay, got it. Thanks. ओके, Yeah. वेरी गुड, ग्रेट. Okay, so this is actually a very beautiful thing. I could have stayed here for a long, and I could have, जितनी भी आपने NCR की प्रॉपर्टीज है ना, वो सब इसी से प्रूव हो जाती हैं. NCR is equal to NCN minus R, right? ये सारी प्रॉपर्टीज इसी तरीके से प्रूव हो सकती है, because the number of ways to go from here to here will be same as the number of ways to go to here to here. And if you look at it very closely, you might see a Pascal's triangle as well. अगर आप इसको move कर दोगे तो you will end up actually seeing a Pascal's triangle, right? So maybe that is for some other day, but it's very cool to look at. मतलब काफी सारी answers निकल के आते हैं shortest path से. Alright. So this is the next question. I'll give 5 minutes for this. Again, a good question. काफी नई techniques होंगी इसमें. Alright. I'll give 5 minutes for this. This is a hard question. मतलब lengthy question. Yeah.
All right, I'm sure this will bring back memories for you. ऐसे बहुत questions होते थे usually for JEE prep. 7-letter words are formed by using the letters of the word success. Um, so one is basically the number of ways in which you can do this. The second one is this. Third, fourth. You have to add up all of these things and give me the final integer answer. All right, we've gotten a response from Sasidhar. Okay. All right. It's not okay. Let me just do a survey real quick, and then I think I could be on the same. We all could be on the same page. कितनों का टू अटक रहा है? 1 3 4 हो गया, लेकिन टू अटक रहा है. कोई है ऐसा जिसका 1 3 4 तो इजिली हो रहा है, लेकिन टू अटक रहा है, या और भी अटक रहे हैं, तो यू गाइस कैन से दैट, बिकॉज वन तो बहुत One स्ट्रेट and फॉरवर्ड two. है. Yeah, वन इन one टू and two अटक stuck with one and two. Yeah. रहा है. ओके. ठीक है. मेरे को लगा था 3 and 4 का 3 और 2 हो सकता है यूजली. 4 तो बहुत इजी है. डू यू गाइस नीड मोर टाइम और शुड आई रिवील द आंसर? So one more minute. Yeah, some more time, please. 1 मिनट और दे देता हूँ. ठीक है. काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे इससे क्लियर हो जाएंगे, और जिनसे नहीं भी हो रहा है वो एक नया तरीका मैं बताऊंगा इसमें करने का. ठीक है. ये अपने आप में हर क्वेश्चन डिफरेंट ही है बेसिकली. ठीक है. आई थिंक आई शुड नाउ रिवील दिस आंसर. ओके. Let's see if anyone got it right. The answer was 192.
ठीक है, देख लेते हैं. I hope I haven't messed it up here, but let's see, let's see. ठीक है, let's look at the first one. First one. Anyone wants to give me how did they go about question number one, or the first part? First we arranged the two C's, E and then between the gaps we can arrange the S. Exactly. So this is called as the gap method, right? Gap method बस नाम ही नाम है, वैसे है तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड. राइट, सो यू हैव सक्सेस. ये तुम्हारी स्ट्रिंग है. ये कह रहा है कि दो सीज साथ में है लेकिन कोई भी दो एसेस साथ में नहीं है. तो मैं क्या करूंगा इसमें कि मैं दो सीज को एक्स मान लूंगा. ठीक है, और क्या रह गया मेरे पास, यू एक्स ई. अब इस यू एक्स ई में कितनी चीजें मैं भर सकता हूँ, 4. राइट, मतलब अमंग्स दिस यू एक्स ई देयर आर 4 प्लेसेस. राइट, एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द गैप मेथड, क्योंकि इसमें मैं गैप्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. ना मान लीजिए इन जो 4 खाली जगह हैं उनमें से मैंने कोई भी 3 जगह चुन ली और वहां पे एस को रख दिया, तो जो भी परम्यूटेशन बनेगी वो हमेशा ऐसी ही बनेगी, सच दैट टू सीज आर टुगेदर एंड नो टू एसेस आर टुगेदर. सो आंसर कितना हो गया, 4c3 into 3 factorial. Right, so the answer is this is 4 times 6, which is 24. How many of you got this right? कितनों का सही था ये? Yeah, this Yes. was okay. All right. Second one, I will actually delay the second one. मैं लास्ट में करूंगा क्योंकि second one ही सबसे ज्यादा मुश्किल है, बाकी सब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो मैं फोर्थ वन से स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ तो सबसे इजी है, राइट? यू से शुरू हो रहा है, तो अगर यू से शुरू हो रहा है तो हमारे पास क्या रह गया, हम यू को हटा देंगे, यू विल बी लेफ्ट विद दिस. तो ये कितना हुआ, एस दिस 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 दिस. सो यू विल हैव व्हाट, एस सी सी ई एस एस. तो कितनी चीजें रह गई है? दिस इज 6. सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. कोई बता सकता है कितना है? 60. This is 60. All right, great. I'll take your word for this. 60 है ना? Okay, fine. Yeah, 60. All right, तीसरा करते हैं. कितनों को तीसरे में डाउट है? Anyone who has a doubt in the third one? थर्ड भी एक्चुअली एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है ये. All C's are together and all S's are together and E comes before you. तो पूछा क्या जाता है that E comes before you, राइट? तो अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो मैं क्या कहूंगा कि सीसी को मैंने एक्स मान लिया, एस को मैंने वाई मान लिया, तो मेरे पास रह क्या गया बेसिकली, अब यू ही रह गया. तो मेरे पास जो स्ट्रिंग रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी. ठीक है, इन किस्म के क्वेश्चंस को करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि जब भी ये लाइन लिखी मिल जाए ना आपको कहीं, दैट ई कम्स बिफोर यू, राइट, तो इसका मतलब ई और यू की परम्यूटेशन को, मतलब एक ही किस्म की परम्यूटेशन रखनी है हमें, उसकी दो किस्म की नहीं रखनी, राइट? सो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि ई एंड यू आर ए एंड ए बेसिकली, राइट? सो ये हो जाएगा ए ए एक्स एंड वाई. अब तुम मान लो तुम्हारे पास एक कोई स्ट्रिंग है जो ए ए एक्स एंड वाई है, राइट? सो तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग है जो ए ए एक्स एंड वाई है. कितने तरीके से तुम इसको अरेंज कर सकते हो? दिस इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है कि नहीं? सो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड वन. किसी को डाउट है इसमें? Can you explain how, मतलब वो कैसे काम कर रहा है सिस्टम? हाँ हाँ बिल्कुल. देखो ई वो ये कह रहे हैं ना कि ई हमेशा यू से पहले आ रहा है. ठीक है, तो मान लो मैंने कोई ऐसी स्ट्रिंग बना दी, है कि नहीं? तो मैं इसका काउंटर पार्ट नहीं बना सकता जहां पे ये हो. ठीक है, तो मुझे इसकी अपनी परम्यूटेशन को घटाना है. मतलब वो, मतलब ये जो ऑर्डर है वो
हमेशा इंटैक्ट रहे। तो मान लो अगर तुमने ऐसा कुछ किया, राइट, ऐसा कुछ हुआ, तो मैं ये नहीं चाहूंगा, आई डोंट वांट दिस थिंग। तो हर एक के लिए तुम्हारे पास एक करस्पॉन्डिंग वो है ना, जिसमें वो फ्लिप हो जा रहा है यू और ई आपस में, है कि नहीं? हर परम्यूटेशन के लिए तुम्हारे पास एक ऐसा परम्यूटेशन है जिसमें वो फ्लिप हो जा रहा है। तो इसका मतलब डिवाइड कर दोगे ना 2 फैक्टोरियल से। ओके, सो यू आर सेइंग ये 4 फैक्टोरियल में से अरेंज हो सकता है, या तो हाँ ई यू के आगे आएगा या पीछे आएगा, हम लोग हाँ एक हटाना है। हाँ, एग्जैक्टली। ओके आई फाइन। थिंक एक ग्रुप में किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पोस्ट किया था। आप लोग अगर यूजुअली ग्रुप में रहते हैं और वो आंसर, आई थिंक एक बच्चे ने आंसर वैसा किया भी था, आई एम नॉट श्योर उसने कहीं से देख के किया था या वैसे किया था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि 3 बच्चे हैं, 3 माएँ हैं, राइट, और वो इंटरव्यू में जा रही हैं, वो इंटरव्यू में जा रही हैं सच दैट कोई भी बच्चा अपनी माँ से पहले नहीं जा सकता है, कोई माँ अपने बच्चे से पहले है, समथिंग लाइक दिस। यू गाइस रिमेंबर, एनीवन रिमेंबर्स दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? यस। Yes, हाँ, yes. ये तो उस क्वेश्चन को अगर तुम सोचोगे ना, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अब क्या हो जाएगा, अगर इफ आई वांट टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट दैट, कि तुम ये देखोगे कि बच्चे और माँ के पेयर को तुम, सो चाइल्ड एंड मदर को तुम कोई एक पेयर मान लोगे, इसको ए कर दोगे, राइट, और C2 M2 को तुम कर दोगे बी, राइट, और C3 M3 को कर दोगे C, राइट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? तो बेसिकली तुम्हारे पास हमेशा AA BB CC की स्ट्रिंग बनेगी। इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? इसको अरेंज कर सकते हो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल पावर 2, सॉरी 3। 3। या ठीक है, तो ये आंसर आता। ठीक है, किसी एक ने ऐसा आंसर लिखा था, आई एम नॉट श्योर कि कैसे लिखा था, बट दिस इज द करेक्ट रीजनिंग बिहाइंड इट। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, अब लास्ट ये रह गया 2 वाला, नीदर टू सीज एंड नीदर टू एसएस आर टुगेदर। ये मुश्किल भी है, ये आसान नहीं है। कोई बताना चाहेगा किसी ने अगर अप्रोच किया है तो? सो व्हाट आई डिड इज ई और यू को अरेंज कर दिया, तो वो 2 फैक्टोरियल से हो गया ना। हमारे पास 3 स्पेसेस हैं, उन 3 स्पेसेस में 2 सी डाल दिए, और फिर 5 स्पेसेस आए टोटल, उसमें 3 एस डाल दिए। आपका आंसर क्या आ रहा था फाइनल? टोटल आंसर गलत है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द नंबर 2 फैक्टोरियल इनटू 3C2 इनटू 5C3। नहीं, 5C3 नहीं आएगा। हेलो चलिए सर। देखिए, हाँ 60 आ रहा है सर, 60 आ रहा है सर, सेम प्रोसेस में मैं भी किया था, 60 आ रहा है सर। 60 आ हाँ रहा नहीं, है। गलत है वो, गलत है वो। सर मैंने ऐसा किया था कि हम्म, पूरे का पूरा टोटल 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया, और उसमें से जो सी सी साथ में है और एस एस साथ में है वो माइनस कर दिया। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी 2C साथ में नहीं है और कोई भी 2S साथ में नहीं है। आपने हाँ जो किया है ना, उसमें आपने सबको इकट्ठा घटा दिया, सो दैट इज इनकरेक्ट। समझ रहे हैं? दोनों में यस फर्क है, सर। दोनों सवाल। ठीक है, चलिए, ये मुश्किल क्वेश्चन है, आसान नहीं है, और ये काफी आता है। आपने अगर ये क्वेश्चन आप ऐसे वर्ड्स में बहुत देखेंगे कि इंजीनियरिंग में मैं इंजीनियरिंग दे दिया या कुछ और दे दिया। अच्छा, अब 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका तो एक है डी मॉर्गन्स लॉ। किसी को याद है डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता था? नॉट मी। यस सर। हाँ, क्या होता है? ए यूनियन बी ए का, यूनियन बी डैश इक्वल टू ए हाँ, डैश इंटरसेक्शन बी डैश। है ना? हाँ, तो डी मॉर्गन्स लॉ एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो तरीका मैं नहीं लूंगा अभी, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक और बड़ा ही क्लासी तरीका है इसको सॉल्व करने का, आई टेक दैट अप्रोच। किसी को अगर ये सुनना है तो क्लास के बाद रह जाए, मैं बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है, ऑलराइट। कैसे करेंगे इसको? ये कह रहा है कि नीदर टू सीज आर टुगेदर, नीदर टू एसेस आर टुगेदर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यू CCE, और मेरे पास SSS ऐसे पड़े हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं, मेरे पास कितनी जगह है इसके बीच में? 5 है। सो 1 2 3 4 5, 5 जगह है। इन 5 जगहों में से मैं कोई भी 3 जगह पिक कर लूं यूजिंग गैप मेथड, तो कितना हुआ? 5C3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इनमें बस 5 जो जगह पिक की उसमें से एस रख दिया। तो मान लो ये यहाँ एस रख दिया, यहाँ एस रख दिया, यहाँ एस रख दिया। अब तुम देखोगे कि इसमें से कोई भी एस साथ में नहीं है, राइट।
और कितने तरीके से इसको परम्यूट कर सकते हैं? इसको परम्यूट कर सकते हैं हम 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल तरीके से, राइट? तो एक ये चीज हो गई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो एक ऐसा भी सिचुएशन आ जाएगा जहां पे मैंने एस को यहां लिख दिया, एस को यहां लिख दिया और एस को यहां लिख दिया, है कि नहीं? तो ये तो इनवैलिड है ना? ये इनवैलिड इस वजह से क्योंकि दो सी साथ में हो गए। तो मैं अब क्या करूंगा कि मैं इस परम्यूटेशंस में से, तो ये टोटल कितना हुआ? 5c3 इज 10, दिस इज 12, तो ये 120 हो गया। ठीक है, अब इन 120 परम्यूटेशंस में से मैं वो परम्यूटेशंस घटा दूंगा जिसमें दोनों सी साथ में थे, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यू सी सी को मैंने कुछ एक्स मान लिया, यू ई एक्स हो गया। ठीक है, अब इस यू ई एक्स में मेरे पास कितने प्लेसेस हैं? 4 प्लेसेस हैं। यहाँ पे मैं किसी में भी 3 प्लेसेस को उठा सकता हूँ, तो 4 से 3 से कोई भी 3 उठा लिया। सो ये कितना और ये कितने तरीके से घूम सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से, राइट? तो ये कितना हुआ? 4c3 इज 4, दिस इज 6, दिस इज 24, राइट? तो मुझे ये 24 तरीके घटाने पड़ेंगे 120 में से टू गेट द फाइनल आंसर, राइट? सो द फाइनल आंसर इज 120 माइनस 24 विच इज 96। किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट्स? या किसी को सर समझ में? नेदर 2s साथ में नहीं रहना है ना सर, तो 3s भी साथ रह सकता है क्या? अरे नोट 2 में तो कैसे हो सकता है ना ये? अरे मतलब तुमने अगर ये कर दिया, तीन So when you're एसेस को साथ में रख दिए, when you're तो calculating a 24 then you are considering x as all the s's together, right? yes, I'm considering all the c's together, not s's, the No, c's no, together, you're okay, okay, got it. right? Because you understand here, when I do this step ना, जब मैं ये वाला स्टेप ले रहा हूँ, तो इसमें एक सिचुएशन ऐसी आ जा रही है कि सी साथ साथ थे, ये वाला सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, देखो इसमें एस एस अलग है ना, कोई भी एस साथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पे सी साथ में आ गया। तो मुझे ये सारी सिचुएशंस हटानी पड़ेंगी जहां सी साथ में है। तो उसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया? उसको मैंने कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया, राइट? तो इसका आंसर आ गया 96। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसका नाम है डीमॉर्गन्स लॉ, लेकिन वो थोड़ा लेंदी है और वो बड़े क्वेश्चंस के लिए काम भी नहीं करता। मतलब काम तो करता है, वो कैलकुलेशन इतनी लेंदी हो जाती है। ठीक है, एनीवन हैज एनी सर डाउट? और एक मेथड पहले डिस्कस किया था ना सर हम लोग, जो जिसमें आंसर 60 आ रहा था, वो गलती बताया आपने, वो गलती क्यों है, बता सकता है क्या? यार ये थोड़ा बाद में पूछ लोगे मतलब क्योंकि मेरा रनिंग। फर्स्ट वी विल अरेंज यू एंड डी, first we हाँ will हाँ, arrange u and d, then we will arrange two c's, and then we will arrange three s's, ऐसा so it जस्ट will वेट अ become 2 मिनट। factorial into. नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपका कोई तरीका रहा होगा, बट लेट मी गो थ्रू सम मोर क्वेश्चंस। उसके बाद क्लास के बाद पूछ लेना, मैं समझा दूंगा वो गलत कैसे था। ठीक है? Okay sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी का सही नहीं हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। अगेन अ गुड क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट इट। और इसके लिए भी मैं आई विल गिव 3 minutes।
I hope the question is clear to everyone. An engineer is required to visit a factory for exactly 4 days during the first 15 days of every month. And it is mandatory that no two visits takes place on the consecutive days. The number of all possible ways in which such a visits to the factory could be made. Right? A good question. Again, don't be hard on yourself. Easy nahi hai ye, right? Think about it. कैसे कर सकते हैं? Hint is कि आपको gap method use करना पड़ेगा. Okay, gotten an answer from Akshay. Anti. Okay, दो ही responses आए हैं. Do you guys need more time या नहीं हो रहा है? I should go about it. I should solve this. Last 1 minute, sir. 1 मिनट चाहिए. ठीक है. All right, I think that's enough. Right. Let me reveal it. 495 is the right answer. And those folks who got 495, I believe you guys would have seen this question before. Am I right or not? Or you just Yeah, picked up on with you? Academy, videos they had Yes, sir. similar Yeah. questions. You might have seen this before as well because otherwise इस question को solve करना इतना straightforward नहीं है if you're looking at for the first time, right? So don't be hard on yourself. It's not an easy question at all. Let me again. It was morely on educational purpose rather than you know testing you or anything. बहुत ही easy question है. ऐसे question काफी मतलब बहुत ही common question है. Easy तो नहीं है. Question ये कह रहा है कि आपके पास 15 दिन है total, है ना? इन 15 दिन में से आपको 4 दिन निकालने हैं सच दैट कोई भी 2 दिन कॉन्जिक्यूटिव ना रहे. तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपके पास 15 नंबर है 1 2 3 4 5 टिल 15 सच दैट कोई भी 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. तो इसमें आप क्या करेंगे? मैं ये कहूंगा कि अगर मैंने किसी दिन को पिक किया ना तो मैं उसे कोड करूंगा 1 और मैंने अगर किसी दिन को पिक नहीं किया तो मैं इसको कोड करूंगा 0. राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को 4 दिन ऑफिस जाना है. अगर मुझे 4 दिन ऑफिस जाना है तो मेरे पास 4 वंस होंगे, है कि नहीं? और मेरे पास 11 जीरोस होंगे. ये बात सबको समझ में आ रही है क्योंकि 11 दिन में ऑफिस नहीं जाऊंगा, 4 दिन में ऑफिस जाऊंगा. राइट. तो जो मेरे पास स्ट्रिंग आएगी वो कुछ इस किस्म की आएगी.
कि 111 4 बार है और 000 11 बार है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए कि आप ऐसा कोई भी स्ट्रिंग नहीं चाहेंगे जहां पे 11 साथ में रहे। तो मतलब ये तो एक इम्पॉसिबल स्ट्रिंग है, ऐसी स्ट्रिंग नहीं चाहते आप। इनफैक्ट आप ऐसी स्ट्रिंग भी नहीं चाहते, राइट? मान लो आपने कोई ऐसी स्ट्रिंग बनाई, ये भी आप नहीं चाहते। ये क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये देखो, जो आपने 2 दिन पिक किए वो कॉन्जिक्यूटिव हो गए, है ना? तो आप किस किस्म की स्ट्रिंग चाहेंगे? आप इस किस्म की स्ट्रिंग चाहेंगे सच दैट नो वंस आर टुगेदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम गैप मेथड यूज करेंगे, राइट? तो मेरे पास 11 चीजें हैं, 11 जीरोस हैं, मैंने उनको प्लेस कर दिया। इन 11 जीरोस के बीच में मेरे पास कितनी जगह है? 12, राइट? तो इन 12 में से मैं कोई भी 4 पिक कर लूं। अरे सॉरी, दिस हैपेंस अ लॉट विद MS Teams, sorry for that, right? Sorry, not this happens a lot with OneNote, but nonetheless, so you have 11 zeros, and amongst these 11 zeros you have 12 spaces, right? तो ये 12 में से कोई भी 4 उठा लो, right? That will be a valid picking. So this is your answer. Is this clear? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? मैंने I अगर thought कोई नंबर, सॉरी, कम अगेन। I say it's clear from my side. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकता। Great. So Akash is saying that this should be our last question, but what I will do is I will ask you, I'll put up the next question because it is on a very similar idea, and all the folks who got the right answer to this. So maybe, Aditi, Akshay, Deb, Param, and Surya. If you got this particular one right, because it's a very common question, I'm sure you would have looked at this before. But the next one is actually not very common, and it sort of is, it's a play on this particular question. So can you try and do this? And perhaps after this, we'll call it a day, right? There were more questions, but unfortunately, my speed wasn't up to the mark. I couldn't complete all the 15 questions. But nonetheless, this question is a play on the previous question. So if you have understood the previous question, you can perhaps go ahead and solve this one. There's a slight tweak that you need to do, but the idea is very similar. I'll give 3 minutes and then we'll call it a day. Okay, I've gotten an answer. So you gave this, Surya. Great.
ओके, सो ये अच्छा हुआ है कि दिस टाइम वी हैव गॉटन अ वेरी good spread of answers. Let's see who has who has who has gotten this right. Actually, अगर आप पिछले वाला तरीका ना करें तब भी ये सवाल निकाल सकते हैं वैसे तो, but I somehow want you to use that. Okay. All right. Let me just quickly reveal this. The answer is 16, and two guys got it right. Deb and Dignesh. All right, Dignesh or Deb, बताना चाहोगे क्या किया आपने? Yes, sir. So in octagon there are total 8 points. Mm-hmm. So we can make a total of 56 triangles, 8C3. Mm-hmm. From that, we have to remove the अच्छा अच्छा triangles अच्छा, तो which have one समझ side common हाँ and ठीक है, two समझ गया side common आपने, also. लेकिन दूसरा तरीका यूज किया, राइट? ठीक है, Yes, sir. मैं चाह रहा था कि जो मैंने अभी आपको तरीका समझाया वो करें, आपने बिल्कुल सही अरे किया, जी वो बिल्कुल सही तरीका। आपने एट कहाँ सी गए थे थ्री चलो। किया होगा, माइनस 8 किया होगा, और माइनस 8 into 4 किया होगा, है ना? यही किया था। Yes, yes, sir. हाँ, तो ये आंसर 16 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, ठीक है, पर जिनको फॉर्मूला नहीं मालूम उसके लिए मुश्किल रहेगा ये। बट चलिए मैं इस पे बात करता हूँ। मैंने आपको अभी एक तरीका बताया था और इसी वजह से मैंने ये सवाल दिया, राइट? देखिए मैं कैसे इस प्रॉब्लम को ऊपर वाली प्रॉब्लम में तोड़ सकता हूँ, राइट? समवन इज अनम्यूटेड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, काफी डिस्टरबेंस हो रही है उससे। हाँ, थैंक यू। अच्छा चलो देखो, I want to pick a triangle in this octagon such that no side is common. That means I want a triangle maybe something like this. ठीक है, एक वैलिड ट्रायंगल ये हुआ, एक कुछ ऐसा हो सकता है ना? एक कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो इस किस्म के ट्रायंगल्स ही पिक कर सकता हूं मैं, जिसमें जिसमें कोई ना साइड कॉमन ना आए, राइट? तो ध्यान से देखो, अगर दो तीन ट्रायंगल्स बनाओगे तो यू विल रियलाइज यू आर ट्राइंग टू पिक नंबर सच दैट नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ दैट यू आर सेइंग यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 numbers from 1 to 8, and you are trying to pick numbers, three numbers such that no two are consecutive, राइट? तो उसको करने का तो मैंने अभी तरीका बताया ही आपको, तो मतलब 3 ones पिक करोगे, 5 zeros पिक करोगे, है कि नहीं? तो और यू वांट टू पिक टू थिंग्स सच दैट नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, तो उस तरीके से क्या हुआ कि पांच जीरोस के बीच में, सॉरी, हाँ 5 हो गए, 5 जीरोस की बीच में कितनी जगह है? 6 जगह है ना? तो ये कितना हो गया? 6C3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए था? 6C3। राइट? कहीं पे भी तुम किसी एक जगह में 1 भर दो तो यू आर ऑलवेज पिकिंग अ थिंग विच इज नॉट कॉन्जिक्यूटिव। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है मुझे प्रॉब्लम क्या है? इसको हल्का सा 1 ट्वीक and करना 8. पड़ेगा। हाँ, 1 and 8 1 and 8. प्रॉब्लम है। अगर तुमने 1 और 8 पिक कर लिया तो वो एक वैलिड ट्राइंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि 1 और 8 से जो तुम ट्राइंगल बनाओगे वो हमेशा एक साइड कॉमन रख देगा। ठीक है, तो इस तरीके ने वो ये वाले ट्राइंगल्स भी कैलकुलेट कर लिए, तो उसे तुम्हें घटाने, तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं कोई बता सकता है? 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ऐसे, राइट? कैसे कैलकुलेट किया मैंने? 4 ट्राइंगल है, बहुत इजी है। एक बार 1 यहां हो सकता था, सॉरी 3 के नीचे हो सकता था एक बार 1, राइट? एक बार 1 3 के नीचे हो सकता था, एक बार 1 4 के नीचे हो सकता था, एक बार 1 5 के नीचे हो सकता था, एक बार 6 के नीचे हो सकता था। तो ये 4 डिफरेंट ट्राइंगल्स मैंने गलत कैलकुलेट कर लिए, तो उनको घटाना पड़ेगा। सो 63 - 4 इज 16, द राइट आंसर। ठीक है, तो हालांकि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है काफी कॉमन है और बच्चे पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आजकल एग्जामिनर्स भी बड़े स्मार्ट हैं, उन्हें मालूम है कि ये सब पढ़ा रहता है, तो वो ऐसे इस किस्म के क्वेश्चंस दे देते हैं जहां पे ये यूज हो जाता है। अब जैसे इसने जो अभी एक लड़के ने आंसर दिया था ये वाला, ये भी एक वैलिड आंसर है। मैं लिख देता हूँ इसका आंसर क्या आता है, NC3 - N into N plus 4, सॉरी एन माइनस 4 नॉट
right? So this is the number of triangles such that no two are consecutive. So no side is common, राइट? तो ये भी सही होता है, लेकिन मैं इसको क्वाड्रिलेटरल भी बना सकता था। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता तो ये फॉर्मूला यूज ना हो पाता और आपको इसी तरीके से करना पड़ता हो, ठीक है? So before I wrap it up, I actually remember that I've made one mistake in one of the proofs. तो मैं बस उसको rectify करता हूँ. I'll take your doubt and I think after that you can go. ठीक है? तो I actually made one slight error while proving this thing. मुझे अभी पढ़ाते वक्त याद आया कि मैंने इसको इंटीजर बोल दिया. मैंने तो बोला ही था कि ये इंटीजर है, तो ये तो इंटीजर होगा ही होगा, राइट? So the idea was to prove that x divided by 7 factorial is an integer actually, right? तो मैंने आपको initially ये कहा कि this number is equal to this number and this is also same as this, right? अगर आप इसको 7 factorial से divide कर देंगे तो मतलब यहाँ पे भी 7 factorial से divide कर देंगे, है ना? बट अगर इस नंबर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये बस ये एक नंबर है, राइट? दिस इज 2017 C7. आप ये जानते हैं कि ये भी एक इंटीजर होगा, राइट? सो आपने ये प्रूव कर दिया दैट x डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इज एन इंटीजर, राइट? सो आई मेड दिस मिस्टेक हियर. सो if you have any questions about it you can ask me, otherwise this is how it should have been done, right? मैंने पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया था. Alright guys, if you have any doubts you can stay. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए मैं वो अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ. सब अच्छे क्वेश्चंस हैं. किसी को कोई डाउट होगा, जैसे किसी ने स्टार्टिंग में बोला था जनरेटिंग फंक्शन ये वो, तो वो सब के क्वेश्चन थे लेकिन मैंने टाइम नहीं है तो नहीं ले पाया. मे बी सम अदर डे, बट मैं क्वेश्चन जरूर डाल दूंगा. आप लोग ट्राई कर लीजिएगा और किसी को कोई डाउट होगा तो आई विल पुट अप द सॉल्यूशन. ऑलराइट, सो दैट्स सर एक ऑल डाउट फ्रॉम है। माय साइड. हाँ बोलो. सर वो जो आपने डी मॉर्गन लॉ से बोला था, हाँ हाँ सक्सेस वाला, हाँ हाँ तो हाँ वो सर एक बार बता देंगे? हाँ ठीक है, सुन लो. डी मॉर्गन लॉ से कैसे होगा? डी मॉर्गन लॉ से कैसे होगा? तुम ये कहोगे कि एक नया सेट लेता हूं मैं, सक्सेस था, एक सेट ऐसा बनाऊंगा जिसमें सीसी साथ में आ रहे हैं हमेशा, ठीक है? और मैं एक ऐसा सेट बनाऊंगा जिसमें हमेशा एसएस साथ में आ रहे हैं, ठीक है? और मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कोई भी दो सी साथ में नहीं है और कोई भी दो एस साथ में नहीं, राइट? तो ये कैलकुलेट करना है. तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ से तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, विच इज नथिंग बट दिस, ठीक है? तो इसको तुम तोड़ लोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो तुम्हें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, और फिर ये नंबर्स को भर दोगे और एन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा, राइट? सो डी मॉर्गन्स लॉ से ऐसा होता है. लेकिन ये तरीका मत यूज करना, क्योंकि यूजली जब कोई एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, जैसे मैं भी कभी एक क्वेश्चन दूंगा और मैं अगर अच्छे पेपर में दे रहा हूँ तो मैं इतना छोटा नहीं दूंगा, मैं इंजीनियरिंग टाइप का यूज कर लूंगा. अब इंजीनियरिंग टाइप में अगर तुम ये डिमॉर्गन लॉ लगाने बैठ जाओगे तो खत्म हो जाओगे. मतलब ये नंबर बहुत ही गंदे आते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करने का मन ही नहीं करेगा. अगर कैलकुलेटर है तब भी नहीं कर पाओ, मतलब बहुत ही लेंदी आते हैं, राइट? सो जो मैंने तरीका यहाँ बताया था दैट वर्क्स वेरी वेल. थैंक ठीक यू है, सर। किसी को और कुछ पूछना है? और कुछ? Shall I? Someone was saying not able to hear me. Were you guys not able to hear me? नहीं, probably उसके साथ Hello. इंडिविजुअल प्रॉब्लम था, मैं उसको मैसेज कर दिया था. Okay. All right. किसी को कोई क्वेश्चन? Someone is saying what is cardinality? Cardinality का मतलब होता है number of elements in a set. ठीक है, खत्म करें आकाश फिर? हाँ, रैप अप करते हैं. एंड रिकॉर्डिंग रहेगा तो जिसको भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो रिकॉर्डिंग सुन के क्वेश्चन पूछ सकते सर हैं. वो वर्ड अरेंजमेंट में आपका 96 आंसर आया और हमारा 60 आ रहा है, वो हाँ हाँ एंड ऑफ हाँ, बताओ तुम्हें. हाँ, वो आंसर 96 है उसका, वो बिल्कुल सही है. बताओ तुमने क्या किया था?
बोलो। Sir, am I audible? नहीं, probably हाँ उसके बोलो। साथ इंटरव्यू प्रॉब्लम था, उसको मैसेज कर दिया। हाँ, नहीं नहीं, बोलो तुम्हें क्या किया था, कैसे सॉल्व किया था क्वेश्चन? Someone is saying what is cardinality? Cardinality का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। आई थिंक किसी के में रिपीट हो रही है। Sir, hello. हाँ हाँ बोलो बोलो शशिधर, तुमने कैसे सॉल्व किया था उस क्वेश्चन को? शशिधर हेलो। उसका लैग हो रहा है एंड रिपीट हो रहा है इसीलिए। कैन यू हियर मी? अक्षय, हाँ yes. हाँ अक्षय बोलो, go ahead। So, मेरा और शशि का एक ही सोल्यूशन था। So, पहले हमने E और U अरेंज कर दिया, that is 2 factorial ways। एक मिनट रुक जाओ, ई Sir, और यू रख दे। पहले U and E को अरेंज किया था, यू और ई को कैसे अरेंज किया, मतलब उसके व्हाट डू यू मीन बाद बाय टू अरेंजिंग C's यू और अरेंज ई? किया था। U and D अरेंज we can arrange in 2 factorial into 3C, 2C's अरेंज करना, तो 3C2 into अरे 3C2, रुको 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 रुको, I think lag हो रहा है सर, इसलिए वो 2 लग नहीं रहा है। factorial into 3C2 into 5C3। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। किसी अक्षय के में तुम बोल रिपीट हो सकते हो रही क्या? है। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो अक्षय। उसको 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 म्यूट कर वही दो। सर, U E को अरेंज किया 2 factorial वे में। कुशाग्र शशिधर को म्यूट कर दो। सर आवाज आ रहा है सर मेरा? उसका लैग हो रहा है, रिपीट हो रहा है इसीलिए। हाँ, आई एम एबल टू हियर यू सर। शशिधर कैन यू म्यूट योरसेल्फ? शशिधर कहाँ है, मैं म्यूट कर देता हूँ। आकाश तुम म्यूट नहीं कर दिया ना उसको, ठीक है। हाँ, अक्षय म्यूट है। बोलोगे बोलोगे क्या हाँ तरीका था तुम? यस यस। तो E और U को अरेंज किया, so 2 ways, EU या फिर UE। किसके रिस्पेक्ट में अरेंज किया? व्हाट डू यू मीन बाय ई और यू को जस्ट अरेंज जस्ट किया? दिस ब्लैंक पेज पे E और U अरेंज। ठीक है, तो ये कितनी से 1 2 3 4 5 6 7। यस। हाँ बोलो, ई और यू को लिख दिया मैंने यहाँ पे कहीं। हाँ, तो वो 2 वेज हो गया। ओके, एंड फिर देन हमारे पास 3 गैप आए। 3 गैप है। ओके 3 गैप है। यस। हाँ तो फिर उसमें से 2 चुन लिया। कोई 2 चुने। ओके ये और ये, फिर हाँ, उसके बाद हमारे पास अब 5 गैप हैं, तो उसमें से फिर 3 चुन लिया। क्या समझा नहीं मैं, ये और ये चुना फिर 5 गैप कैसे आए? तो 4 लेटर हो गए ना टोटल, CC U and U and E। Yes sir, already I muted, that's not my mic. यू स्टे म्यूटेड, डोंट वरी। ठीक है। नहीं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला, एक मिनट रुक जाओ। हाँ सर, तो ये यू रहा, U। ये हाँ ई बोलिए। रहा। हाँ ये यू है, ये ई है, इसमें 3 हम्म, जगह हैं। 3 में से कोई 2 उठा लिए, मान लो ये उठा लिया ये उठा लिया, ठीक है। अब क्या करूं? हाँ, तो अब हमारे पास टोटल अब 4 इसमें लेटर्स हो गए ना, 2 C's and E and U। 2 C's और E and U। ओके, तो तुम हाँ, तो बेसिकली, अभी 4 लेटर्स में 5 गैप बने, तो उसमें से 3 चुना फिर ऐसा। अरे नहीं तो ये तुमने ऐसा कर दिया ना, मतलब तुम अब ये कह रहे हो कि इसमें से कोई 3 चुन लिया है कि नहीं? यस यस। हाँ तो ये तो गलत है ना, तुम अगर 3 चुन लिए तुमने ऐसा, तो ये तो साथ में आ गए ना। नहीं नहीं, वो C के बीच में भी एक गैप है, वो एक्चुअली सी आप के, समझ रहे हैं, मुझे गलती। अच्छा ये कर दिया मैंने। हाँ बट ओके, हाँ तो तब भी इसमें गलत है ना, तब भी गलत है ना, ओके। क्योंकि अगर हाँ मैंने 3 ये उठा लिए तब भी तो ये सर दोनों CC साथ में। साथ में मत लिखो सर, प्लीज राइट इन द स्पेसेस ऑफ U and E। अच्छा ठीक है, सी और सी यहाँ लिख दूं कहीं, हम्म, राइट? तो तुम पहले ये कर रहे हो कि यू ई के बीच में 3 जगह हैं, तो 3 में से कोई 2 उठा ली तुमने और वहां पे सी को प्लेस कर दिया, हाँ ये कह रहे थे? यस ये कह रहे हो? यस अच्छा, यस। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास अब 5 1 जगह हैं। 2 3, हाँ, तो अब इन 5 में से कोई भी 3 उठा ली। 3 उठा लिए। ओके ओके, तो 5 में से कोई 3 उठा ली, तो एस सो दैट सी इज 10।
S S C S, एक मिनट, वेट, इसमें से कोई भी 3 उठा ली, लग तो सही रहा है, लेकिन ये कितना हुआ, 2 फैक्टोरियल इंटू 60 आ रहा है सर आंसर, तो हम कुछ मिस कर रहे हैं, लाइक आंसर अगर कम आ रहा है तो वी आर मिसिंग फ्यू केसेस। सर इसमें एक केस मिस हो रहा है कि इन्होंने पहले सीसी ले लिया, तो पहले एसएस भी ले सकते हैं ना, तो वो एक केस मिस हो रहा है। नहीं, वो तो आ जाएगा ना, मान लो एस सर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, स्टिल आंसर 80 आएगा, लाइक 60 प्लस अगर नहीं वो नहीं एसएस भी लेते हैं तो। नहीं, आंसर 96 बिल्कुल सही है। एक मिनट, ये देखना तो इसमें गलती कहाँ है। सर इसमें एक केस मिस हो रहा है, CSC केसेस मिस हो रहा है सर। डबल सी कौन सा अगर केस साथ में मिस हो हो रहा है? तब भी केस आएगा सर। मान लो आप लिख दो यू 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 सी सी U ई सी सी। अरे U C C तो आएगा ही नहीं ना कभी, उसने ये कर नहीं दिया है सर, तो ना। वही यही केस हम मिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम सी और सी के बीच में एक एस रख दें तो वो वैलिड हो जाएगा ना, और अच्छा, बाकी एस कहीं और आसपास कहीं भी। अच्छा, हाँ, ये मिस हो गया। सर वी ठीक आर है, मिसिंग CSC केसेस सर, वी कैन इंसर्ट S बिटवीन टू C's, वो हमारा केसेस पे नहीं हाँ आ रहा हाँ है। हाँ, सही कह रहे हो, या करेक्ट, ठीक। ऑलराइट, कोई और डाउट है किसी को? नहीं सर, आज के लिए इतना काफी। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? And thanks Akash, the class was really good. Looking ओके, forward to next one. श्योर। फीडबैक के लिए मैं डाल दूंगा, पोल डाल दूंगा, या फिर आप लोग के पास कोई और फीडबैक हो जनरल तो आप हाँ। ग्रुप पे डाल देना। ओके, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। सो विल रैप इट अप, थैंक यू। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग बंद Thank कर you. देना शागरिया।